Okay, we are live. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी नींद खुल गई है। 4 बजे नहीं, 3 बजे ही खुल गई। सो आई थॉट कि चलो 4 बजे से 6 बजे तक का सेशन कर लेते हैं। लेट मी चेक आई एम लाइव और नॉट। ओह माय गॉड, समवन इज देयर। 4 बजे कौन है भाई? ओके, वी आर लाइव। ग्रेट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 2-3 मिनट में। ओह माय गॉड जानवी, अनएक्सपेक्टेड। हैप्पी टू सी यू यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। गुजराती लोग, इतनी जल्दी उठती हो तुम? मेरी तो नींद खुल गई 3 बजे अचानक से। तो अभी एग्जाम भी आने वाला है, तो बस वो चल रहा था कि चलो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। बट तुम अनएक्सपेक्टेडली इस टाइम जगती हो। आज सारे लेजेंड्स पकड़ाएंगे कि कौन कौन इतने सुबह जगते हैं। हैप्पी टू सी यू हियर। और वो भी 2 लोग हैं। कौन है वो 2 लोग? महान आत्माएं जो जगी है इस टाइम पे। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? नो वे। 18 पीपल आर लाइव। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सब उठने वाले लोग हैं। मतलब आई एम मिसिंग दिस ना। अच्छा, वो मेरी नींद टूट गई। मेरी भी आज नींद खुली। अच्छा, आज ही खुली है। हाँ, यस यस। राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एईडीओ एग्जाम, जो कि नेक्स्ट मंथ है, 10 तारीख को। बिहार से हो। नाइस टू सी यू गाइस सर। मेरे को बहुत खुशी हो रही है, कितने लोग जग। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल द वे, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल सोल्स आर हेयर। मतलब इसलिए क्योंकि यार 4 बजे जगने वाले, या फिर कुछ लोग हैं जो सोए ही नहीं आज। ठीक है, 4:10 से सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल बात कर रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा सा फील हो रहा है कि इतने लोग जगते हैं सच में। मेरे को लगा कोई तो होगा ही नहीं ये फ्रेम में। हाँ, मैं अभी सोने जाता हूँ। अच्छा, डॉक्टर्स आर डूइंग दिस हाँ। फ्रेम में, हाँ मैं ही हूँ फ्रेम में। हाँ, यू गाइस आर ब्यूटीफुल सोल। बिकॉज सुना है कि जो सुबह सुबह जगते हैं दे आर ब्यूटीफुल सोल। और मेरी भी नींद खुल गई 3 बजे, पता नहीं अचानक से। सो आई थॉट कि चलो पढ़ लेते हैं। योर हाउस इज नियर। यस, माई हाउस इज फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली नियर रेलवे स्टेशन। सो यस, यहाँ पे आवाज़ आती रहेगी एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग। यार कोई अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि 4 बजे इतने लोग जगे हुए। आई मीन इट वाज अनएक्सपेक्टेड। तो जो सुबह सुबह नहीं जगते वो, मतलब नहीं जगते वो उनकी चॉइस है, बट जगते हैं तो अच्छी बात है। बट इट विल बी नॉइजी।
हाँ, इट्स नॉइज़ी बट क्या होता है ना, जब लाइव हो तुम या फिर क्लास कॉल पे हो तभी नोटिस होता है, वरना आदत हो गई है। हाँ, आई एम स्माइलिंग टू मच, पता नहीं ये जो होता है ना ब्रह्म मुहूर्त वाली खुशी है, आई गेस। हाउ यू विल स्टडी गुड, यस आई वी गॉट टू यूज इट, मतलब नींद भी आ जाती है। ये अर्ली टू मेक सम मैन, पेपर वाले दूध वाले, ये डॉक्टर्स हो के ऐसे नहीं बोले एटलीस्ट यार। आई गेस सी इज ब्यूटीफुल सो, आर यू टॉकिंग अबाउट मी? अच्छा जानवी, तुम ही नोटिस करो यार, दोपहर सेशन में कभी इतने लोग मतलब आते हैं जाते हैं ऐसा वाला, लेकिन भाई बस बस अनएक्सपेक्टेड जो होती है ना चीज, वो वाली खुशी है, दैट्स इट। 4:10 से सेशन स्टार्ट करेंगे, आई एम अमेज्ड। व्हाट इज योर एग्जाम? आप किसी जॉब में हो क्या फिलहाल? नो, आई एम नॉट इन एनी जॉब। मेरी जॉब है कि अभी पढ़ना है, बस यही मेरी जॉब है फिलहाल तो। हम्म, भाई इतनी अच्छी ऑडियंस और ये सब देख के तो लग रहा है कि बात ही कर लो, भरो नहीं। बट 4:10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 4:10 से स्टार्ट करेंगे सेशन, 5 AM पे शायद ब्रेक लेंगे। बट आई एम रियली हैप्पी टू सी एवरीवन हियर। क्या करना था? ब्रेक टाइम आई शुड राइट हियर 5 AM। मेरे को लिखने में भी कितनी खुशी हो रही है, ब्रेक टाइम 5 AM, जो कि मेरे उठने का टाइम 7 AM है। यू मेड दैट पोर्ट्रेट? यस आई मेड दैट पोर्ट्रेट। एंड आई मतलब मेरे को पेंटिंग बहुत पसंद है, बट बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल इन स्टडी नहीं हो पाता है, तो अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी पेंटिंग। आप रोज उठी काफ़ी सताए। कोई फेक डॉक्टर तो नहीं है यहाँ पे, दिल वाले मिल जाता है। अच्छा, वेरी नाइस, आई एम जस्ट किडिंग, नो। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, आई एम इन गुड मूड बिकॉज मेरी नींद टूटी है बहुत दिन बाद, 4-3 बजे, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। सो आई विल नॉट गेट ऑफेंडेड राइट नाउ। बस कोई कर मत देना जानबूझ के। BPSC मीन्स बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ हाँ, सीतामढ़ी से। अरे हाँ, आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी। प्रोफाइल देख लिया क्या? हाँ, आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी, यस। हम्म, कहाँ थे कल रात को? अगर ऐसा रहा तो डेली मेरा वो सुबह वाला सेशन हो जाएगा, बिकॉज हम प्लानिंग के, अब एग्जाम का बहुत कम टाइम है, तो थोड़ा कर ही लो, जो जब नींद खुले तब पढ़ लो, जब नींद है तो सो जाओ। हाँ, मंदिर वाला देख लिया, ओके, थैंक यू सो मच। आई एम बैंगलोर, यू आर फ्रॉम बैंगलोर, ओके, नाइस, ग्रेट गाइस, यू गाइस मेड माय डे। इट कंटेन्स, चलो ठीक है, तो वी वर स्टडिंग ह्यूमन ब्लड। भाई सुबह सुबह कौन ह्यूमन ब्लड पढ़ता है सिवाय डॉक्टर्स के? भाई अभिजीत, आप भी तो सुबह जगते हो? हाँ, सुबह में खरी से, ओ माय गॉड, मतलब बस ये मेरा ही ऐसा चल रहा था, ये 7 बजे उठने वाला, बाकी सारे लोग सुबह उठ रहे हैं। आई एम फ्रॉम आरा भोजपुर, ओके, यू आर फ्रॉम आरा, ग्रेट। यहाँ पे एक कैमूर के भी लोग हैं, रोहतास वाले। वेम्पायर्स ऑल्सो नो, वेम्पायर्स अभी नहीं उठते हैं, अभी भगवान उठते हैं, वेम्पायर्स 12 बजे उठते हैं। चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं, नहीं तो पता चला सेशन बस बात में निकल जाएंगे। 5 बजे ब्रेक लेते हैं फिर। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, 5 बजे ब्रेक लेते हैं। सब अपना ब्लड ग्रुप बता। मेरा तो ये भी पॉजिटिव है। चलो ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ओके।
मेरे को अंदर से खुशी हो रही है, आई डोंट नो व्हाट। बस कोई नजर मत लगा देना मेरी खुशी पे। It contains hemoglobin in which heme iron containing compound is found, and due to this, the color blood is hemoglobin is a proteinous compound which is extremely capable of combining with oxygen and carbon dioxide. The iron compound found in अरे यहाँ पे एक डॉक्टर है और एक अभिजीत है, दोनों बायो वाले हैं, और जानवी भी साइंस वाली है, तो कोई हंसेगा नहीं मेरे साइंस को देख के, क्योंकि ये पीसीएस के स्टूडेंट इतना इजी साइंस ही पढ़ते हैं। व्हाट्स द टॉपिक फॉर टुडे? अभी फ़िलहाल 2 घंटे के लिए आई विल बी डूइंग बायो, उसके बाद का भी प्लान नहीं है, बट अभी तो बायो कर रही हूँ। It contains hemoglobin in which ये तो हो गया। Globin is a protein is extremely capable of combining with oxygen and carbon dioxide. Okay, so it combines with carbon dioxide as well. ऑक्सीजन से तो होता है, ये सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन का। द आयरन कंपाउंड फाउंड इन हेमोग्लोबिन इज हेमाटीन। अगेन कोई नहीं हंसेगा। Give your best. Yes, I'm giving my best. The main function of RBC is to carry oxygen to all cells of the body and bring back the carbon dioxide. Anemia disease is caused, ये ठीक है, ये सब तो basic है. At the time of sleeping, RBC reduced by 5%, and people who are at height of RBC increased by 30% in them. White blood cell, this is called leukocytes. Okay. In the shape similar to amoeba. In shape and function, this is similar to amoeba. अच्छा ऐसा है, हाँ, मतलब formless है एक तरीके से. Its formation takes place in bone marrow, lymph nodes, and sometimes in liver and spleen. The lifespan is 1 to 2 days. Nucleus is present in WBC, but RBC में नहीं होता है. ठीक है. Its main function is to protect the body from disease. The ratio of RBC and WBC is 600:1. Oh my god. This is something new to me, so यहाँ पे थोड़ा मार्क लगा लो. 600:1. Okay. हाँ. Thank you. Blood platelets or thrombocytes. It is found only in blood of human and other mammals. So blood platelets बस mammals में होते हैं और humans में होते हैं. Humans are also mammal ना, तो ठीक है. There's no nucleus in it. Again, platelets में भी नहीं nucleus होता है, बस WBC में होता है. The formation takes place in bone marrow. Lifespan is 3 to 5 days. Dies in spleen. क्या था कि WBC स्प्लीन में भी फॉर्म हो जाता है, और ब्लड प्लेटलेट्स डाई इन स्प्लीन. ओके. द मेन फंक्शन इज क्लोटिंग, तो पता है. फंक्शन टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज. क्लोटिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टू हेल्प ये तो ठीक है. क्लोटिंग ऑफ ब्लड, 3 important reaction during clotting of blood. थ्रोम्बोप्लास्टिन. अब ये क्या है? अच्छा, ये तीनों मिलके करता है थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिन प्लस blood. Okay, so this is the process. 3 important reaction during blood clotting. This is something new. The formation of protothrombin and of the blood vessels take place with the help of vitamin K. तो हाँ, vitamin K भी blood clotting के लिए important होता है. vitamin makes it. Normally clotting takes place the time of 2 to 5 minutes. The composition making clothes of the blood is. Who will answer this? कौन है बायो वाला यहाँ? The compulsory protein in making clots of blood is. Name the protein. The protein which helps in blood clotting.
बताओ बताओ बताओ, कौन है यहाँ बायो वाला? यार ये गला खराब हो रहा है। नहीं, गलत जवाब। गलत जवाब। थ्रोम्बिन तो पहला रिएक्शन है, मतलब फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है काइंड ऑफ, बट इट्स नॉट थ्रोम्बिन। देखा, फंसा दिया ना। जस्ट किडिंग, फैक्ट्स निकल जाते दिमाग से। ओके, ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। फॉर दिस ही वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन द ईयर 1930। For this he was awarded with a, okay, neither. The main reason behind the difference in blood of human is glycoprotein, which is found in glycoprotein is found in RBC called antigens. तो अच्छा, एंटीजेंस को ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं। The main reason is like antigens are for of two types, ये तो पता है, that contain antigen A, blood group A, antigen B, blood group B contains neither of the antigens, तो ये हो जाएगा O। मेरे रूम में पानी नहीं है और मेरा गला खराब हो रहा है। An opposite type of protein is found in blood plasma. This is called antibody. Antibody A and B. Okay, so ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन बी होगा, नहीं एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा, मतलब एंटीबॉडी इज समथिंग ऑपोजिट। बी में ए होगा, ए बी में कोई नहीं होगा, मतलब जो है वो नहीं होगा, और ओ में दोनों होंगे। ठीक है, और इसमें एंटीजन नहीं है। बचपन में ना मेरा मैथ्स और बायो सबसे फेवरेट हुआ करता था। एंड आई वाज लाइक बेस्ट स्टूडेंट इन मैथ्स एंड बायो दोनों। तो 10th के बाद मेरे को कंफ्यूजन हो गई थी कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, बट आई टुक मैथ, क्योंकि डॉक्टर बनने में मेरे को डर लगता था। ब्लड ट्रांसफ्यूज, और मेरे बचपन का सपना डॉक्टर बनना था। मतलब बचपन से वो कि मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो वाला, कि डॉक्टर बनना है। बट 10th के बाद आई थॉट कि चलो ठीक है, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में। आई एम लिटिल डरपोक काइंड ऑफ गर्ल, ये सारी चीज़ों में, काटने फाटने वाला। तो आई चोज मैथ। अभी कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? अभी जो पढ़ लो वो फेवरेट बन जाता है, जो नहीं पढ़ो उससे नफरत हो जाती है। नफरत नहीं, मतलब डर हो जाता है। ओके, ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी कैन नॉट लिव टुगेदर। पीएचडी, हाँ, अब तो वही बच गया एक ऑप्शन कि डॉक्टर लग जाए मेरे नाम के आगे। अभी तो प्लान है कि बस ये एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद शायद कोई डिग्री वगैरह हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी कैन नॉट लिव टुगेदर। हाँ, ये तो कॉमन फैक्ट है। बच्चों, आप भी अपनी किताब हाइक करें, मतलब लाइव रह रह के भी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप लोग बोलोगे तो आई विल म्यूट दिस माइक, एंड फिर भी पढ़ाई कर सकते हो। सो इट्स अ ग्रुप काइंड ऑफ virtual group. In case so happen this get more sticky which spoils the blood. In case of this case, अगर ऐसा होता है तो फिर दोनों स्टिकी हो जाएंगे एंड ब्लड खराब हो जाएगी, यही बात है ना। दैट इज कॉल्ड क्या है, एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड।
Therefore, in blood transfusion, adjustment of antigen and antibody should be done carefully so that ये नहीं हो. ठीक है. Blood group O ये पता है because it does not contain antigen. तो एंटीजन नहीं है तो सबके साथ एडजस्ट हो जाएगा. यही बात है ना. कंफर्म करो कोई. It does not contain any. AB is universal because it does not contain any antibody. आप बोलती रही हमारा भी रिवीजन हो जाए. अच्छा, ब्लड ग्रुप रिवाइज करोगे मेरे साथ. मेरे से तो ज़्यादा ही जानते होगे. आर एच फैक्टर. चलो ये ब्लड ग्रुप हो गया. अब आर एच फैक्टर पे आते हैं. आर एच फैक्टर इन द ईयर 1940 हु डिस्कवर्ड आर एच फैक्टर. ये बताओ. हु डिस्कवर आर एच फैक्टर डिस्कवर्ड. सॉरी, सुबह सुबह ये ट्रेन की आवाज़ सुनानी. ओ यूनिवर्सल डोनर. हाँ, बहुत ही यूनिक फैक्ट बताया है आपने जानवी जी. थैंक यू सो मच. हु डिस्कवर्ड आर एस फैक्टर. ये बता दो. दोनों बायो वाले हो. दोनों बायो वाले हो यहाँ पे. बताओ बताओ. आर एस फैक्टर डिस्कवर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन इन ब्लड. दे डिस्कवर्ड इट इन Stinner and Weiner. I don't know what is this name. Monkey. Therefore, it is called in the blood of that person it is found. Their blood is called RH positive. तो जिसमें ये होता मतलब सब में नहीं होता RH फैक्टर. Okay. Different type of antigen. So this is a type of antigen. Okay. This is not antibody. It is type of antigen. Okay. जिसमें ये होता है. There are RH positive in that person. Not found is RH negative. Okay. ठीक है. At the time of the blood transfusion, RH factor is also tested. तो कैसे पता चलेगा कि आई एम RH पॉजिटिव और नेगेटिव. जो AB पॉजिटिव बोलते हैं मतलब RH फैक्टर पॉजिटिव. हाँ, करेक्ट जानवी. वाओ, वेरी नाइस. लड़की पढ़ती है. हार गया आप. नहीं, ऐसा नहीं है. पहली बार चीजें सुनी ही है. अच्छा. हाँ, सही है. तुम्हारा जवाब सही है. एक और है नेम. मतलब दो लोग मिलके करे थे. एक है वियनर. आई डोंट नो आई एम स्पेलिंग इट करेक्टली और नॉट. विनर. वियनर है. WIENER. ओके. RH प्लस. अच्छा, ये जो ब्लड में A पॉजिटिव होता है, A नेगेटिव होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ RH फैक्टर. कंफर्म करो या मैं ChatGPT से कंफर्म करूँ. RH plus is given to RH plus and RH negative. If the blood of RH plus blood group is transmitted to a person with RH negative, then due to the less quantity for the first time there does not seem any bad effect. But if this process is repeated, then due to फिर से वही हो जाएगी ब्लड क्लॉटिंग. मतलब वो मिक्स हो जाएगा एक तरीके से एंड पर्सन कैन डाई. माय गॉड. Erythroblastosis. If the father's blood is RH plus and the mother's blood is RH negative, then the child then the child to be born dies at the and short span of time after. This happens in the case of second issue. Okay. सुबह ये सब क्या पढ़ने मिल रहा है. ओके, थैंक यू जानवी फॉर कंफर्मिंग. जानवी आपसे बहुत बड़ी क्लास में है. बॉम्बे ब्लड और गोल्डन ब्लड. बॉम्बे ब्लड क्या होता है. पहली बार सुना है.
नहीं, जानवी जानवी खुद ही बता देगी, मेरे को क्या है यार, दो लोग बात कर रहे हैं मेरे बीच में। ओके, मदर एंड फादर। मदर एंड फादर इज ओ ओ, तो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अनएक्सपेक्टेड तो ये नहीं हो सकता, ये भी है ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नहीं हो सकता बस। ओ एन ए, एक्सपेक्ट ओ एन ए, ओ एन बी में ओ एन बी, ओ ए बी में ए एन बी दोनों हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड ओ, ये याद करना होगा या समझना होगा। ए एन ए में ए एन ओ, आई थिंक इसके कुछ नोट्स थे मेरे पास, चलो बाद में देखते हैं। हेमोलिम्फ, हेमोलिम्फ क्या होता है? ब्लड फ्लूइड ऑफ आर्थ्रोपोडा इज अ कलरलेस मेड ऑफ प्लाज्मा एंड hemocytes. It does not contain any respiratory pigment like cockroach. So blood fluid is colorless in cockroach and made of plasma and hemocytes. It does not contain any respiratory pigment. What is this? रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगा मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, क्या नहीं होगा? There's a statement: blood fluid of arthropoda is colorless and made of plasma and hemocytes. It does not contain any respiratory pigment. What does that mean? It will not contain oxygen and carbon dioxide molecules, or what? Please clarify. मैं समझ गया, मैं अभी बच्चा हूँ। सो क्यूट। अभी जितने किस क्लास में? किसी क्लास में नहीं हूँ मैं, एक साल पहले। हाँ, तुम बच्चे हो। मेरे को तो इतनी मैच्योर बातें करके पहले मेरे को लगता नहीं था कि कोई बच्चा ऐसे मैसेज कर रहा है। लाइक ही यूज्ड टू से कि मैं भी अपना मिस्टेक कॉपी बनाता हूँ एंड ऑल। 10th में इतना ज्ञान नहीं था, मतलब इतना तो था ही नहीं कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो यू आर मैच्योर। Hemolymph, it is usually colorless plasma in the system. It does not contain any reservoir. What does that mean? अच्छा, hemoglobin नहीं होता. Spray pigments are substance like hemoglobin. अच्छा, okay. Bind and those pigments bind and transport oxygen. No respiratory pigment, so oxygen is not carried by blood. Okay. मतलब हीमोग्लोबिन है नहीं तो फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा नहीं ब्लड। देन हाउ डू arthropods get oxygen? Oxygen is supplied directly to the tissue through tracheal system. Air enters through. अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन reaches cells by diffusion. That is no respiratory pigment, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं है और वो डायरेक्टली डिफ्यूजन से या डायरेक्टली टिश्यू को सप्लाई हो जाता है। एंड arthropods, amylin, flax, respiratory pigments. Hence, it does not transport oxygen, which is supplied directly to the tissue through the tracheal system. What is the difference between plasma and serum? इसका जवाब अभिजीत देगा, because I don't know. अरे पहली हो रहा था कुछ सेरम सा। अरे बेसिकली आई एम डूइंग कि सेंट से बस पढ़ लो और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़। Some arthropods like arthropods blood does not carry oxygen.
ओके, सप्लाई ये कॉपी कर लो, कॉपी दैट। मैंने दे दिया, वेरी गुड, ओह माय गॉड, दो इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे। नाइस, प्राउड ऑफ यू। और करो, और क्वेश्चन करो, बहुत रिवीजन करने का शौक है। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या था? कंप्लीट प्रोग्रेस, ये तो हो गया। नोटेड सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो मेरा ब्लड हो गया, मतलब मेरा ब्लड रिवीजन भी हो गया। सोचो कितने शॉर्टकट में पढ़ना होता है, और इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते क्योंकि टाइम भी नहीं है। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, नाउ वी आर मूविंग टू सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। 12 घंटे में बायो रिवीजन कर रहे विद शिवानी केशरी। System of human body, digestive system. The complete process of nutrition is divided into 5 stages. So stages can be asked. Ingestion, taking the blood into, taking the food into the mouth. मेरा तो दिमाग ही घूम गया, taking the blood into mouth क्या बोल रही है? Ingestion, taking the food into mouth. अच्छा ठीक है, digestion, conversion of non-absorbable food into absorbable form। ठीक है यार, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। The digestion of food is started from the mouth. Saliva is secreted by cerebral gland and mouth, and which two types of enzymes are formed, ptyalin and maltase. They convert the starch into simple sugar and make it digestible. And human secretion of saliva is approximately day-liter. The nature of saliva is acidic and the pH value is, who will answer? From the mouth, the saliva जो भी है उसका pH वैल्यू बता दो। करो रिविजन मेरे साथ, pH वैल्यू बता के दिखाओ। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है बीपीएससी, मतलब फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, इतना डिफरेंस वाला नहीं आएगा। फैक्चुअल टाइप के कि इसका क्या है पीएच वैल्यू, बट आई गेस इसमें नहीं होगा, मतलब नीट में तो बिल्कुल नहीं होगा, और नेट वाले एग्ज़ाम में पता नहीं। नेट वाले एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन होते हैं? ब्लड का पीएच बताइए। ब्लड इज 7, हाँ 7.3, 7 समथिंग। Janvi is being precise, 7.3. I'm proud of you both actually. पढ़ने वाले बच्चे हैं। Digestion in stomach. The food lies approximately for 4 hours in stomach. pH of saliva बताओ, बता के दिखाओ, बताओ। The food lies approximately after reaching the food in stomach. Gastric glands secrete the gastric juice. This is light yellow acidic
लिक्विड ये पता है, ये HCl secreted from the oxyntic cycle of stomach kills all the bacteria coming. What is this cell? Never heard about this. Of the stomach kills all the bacteria coming with food and accelerates the reaction of enzymes. Hydrochloric acid makes the food acidic by which Tylene reaction of the saliva and Tylene reaction क्या है? Is Tylene react? I think ये misprint है. Hydrochloric makes the food acidic by which Tylene reaction of the saliva and पता नहीं क्या लिखा है. The enzymes in the gastric juice of stomach are The enzymes in the gastric juice of stomach are आपके सामने कोई ऑप्शंस नहीं है. नो हाँ 6 समथिंग ही है. इट इज 6 पॉइंट, फिर से देखने दो. 6.3 है, 6.8. ओके 6.8. सो दिस इज 6.8. मतलब एक तरीके से एसिडिक की तरफ जाओ तो दिमाग में रखो कि एसिडिक है तो 7 से ऊपर नहीं होगा, 7 से नीचे होगा. The enzymes in gastric juice of stomach are हाँ acidic to neutral. अच्छा जानवी, तुम्हारे में भी ऐसे फैक्चुअल वाले आते हैं क्या नेट वाले एग्जाम में? शायद नेट में भी ऑब्जेक्टिव ही होता है. शायद नहीं, नेट में ऑब्जेक्टिव ही होता है. एसिडस गैस्ट्रिक जूस. हाँ बट क्वेश्चन है एंजाइम्स इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक आर. हाँ पार्ट बी में आते हैं. अच्छा और सब्जेक्टिव भी होता है क्या? मेरा भी प्लान था पीजी के बाद वो नेट देने का, बट कुछ टाइम के लिए वो पोस्टपोन है प्लान बिकॉज आई एम फोकस्ड हेयर, मतलब इस तरफ. तो शायद बाद में हो कि नेट करना है पीएचडी वगैरह. हाँ पेप्सिन सही है. दो एंजाइम्स एक्चुअली, पेप्सिन और एक और रिकॉल करने की कोशिश करो. पेप्सिन और so pepsin breaks down the protein into peptones, okay, and the second one breaks down the carcinogen into I don't know ये गलत प्रोनाउंस है या क्या है. कैसीन पता नहीं क्या है, शायद ये गलत प्रोनाउंसिएशन है. आई डोंट नो. सेकेंड इज दूसरे एंजाइम का नाम बताओ. Digestion in duodenum. As soon as the food reaches the duodenum, bile juice from the liver combines with it. As soon as the food reaches the duodenum, bile juice from the liver combines with it. Okay. So this is part of small intestine क्या? शायद कंफर्म करने दो एक बार. It's part of stomach or small intestine? देखो इतने बेसिक क्वेश्चन याद नहीं है. इतनी बुरी हालत हो गई है बायो में. हाँ रेमिन. नाइस नाइस, गुड गुड गुड, वेरी गुड. Dude, I know this thing are very basic for you guys, शायद पता नहीं. मेरे लिए तो अभी फिलहाल यही रटना है. रेनी नहीं होगा जानवी.
नोज में आते हैं। अच्छा, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है क्या? सॉरी, म्यूट कर। देखो बच्चों, देखो, मेरे को याद था कि ड्यूडेनम इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इतने सालों बाद भी अभी भी शक करोगे मेरे काबिलियत पे? व्हाट इज as soon as the food reaches duodenum bilges from the liver combines with it. Okay. Combines with the bile juice is alkaline. That is juice, but it's alkaline. अरे लेकिन यहाँ तो दे रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। हाँ सच में दे रहा है यहाँ पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है। एक बार तुम्हारे बोलने से कंफर्म करने दो दोबारा। First part of small intestine. It is the first part of small intestine. Lies between stomach and jejunum. Main function received bile from liver and gallbladder. Received pancreatic juice from pancreas. नहीं, ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ही। हाँ वही तो पहले क्यों लिखा नो जो इनर lining or lining, what is lining or lining of stomach protects the stomach from acid. हाँ पता है, मुझे याद है, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है पुरानी बातें। Sorry. Food reaches the duodenum by bile juice from liver combines with it. Bile juice is alkaline and it turns the acidic medium. ठीक है। Here pancreatic juice from the pancreas combined with the food. It contains 3 enzymes. ये क्वेश्चन आ सकता है। I should highlight this. From the pancreas combined, it contains 3 types of enzyme: trypsin, amylase, and lipase or lipase. It converts the protein and peptone into polypeptides and amino acid. Converts it converts the starch into soluble. ये याद करना होगा। हाँ ये तो होता है, चलो फैटी एसिड्स करता है। Small intestine. Here the process of digestion completed and absorption of digested food starts. From the wall of the small intestine, intestinal juice secretes the following enzymes contain. So ये आ जाता है कि कहाँ से ये enzymes का source क्या है। This can be a question. तो यहाँ पे highlight कर लेते हैं। Okay. Here the process of digestion completed हो गया। From the wall ये हो गए enzymes. Eruption. It converts the remaining protein and peptone into amino acid. Maltase, ये maltose into glucose. Sucrose into glucose and fructose. Okay, lactose into glucose and galactose. Lipase, emulsified fats into glycerol and fatty acid. ठीक है। ये याद करना होगा क्योंकि मेरी बुद्धि में अभी ये नहीं है।
ये भी याद करना होगा. ओके. इंटेस्टाइनल जूस इज अल्कलाइन इन नेचर. ये भी अल्कलाइन है. और पहले क्या था? इंटेस्टाइन बाइल जूस. बाइल जूस भी अल्कलाइन है क्योंकि ये फूड को न्यूट्रलाइज करने के लिए. और इंटेस्टाइनल जूस in a healthy person, people, approximately 2 liters of intestinal juice secrete every day. Absorption. Reaching of digested food into blood is called absorption. Digested food into blood. Hmm. The absorption of digested food takes place through small intestinal villi. What is this? Assimilation. Use of absorbed food in the body is called. So it is about use, defection, digestive food reaches into large intestine where the bacteria turns into feces, which is excreted through anus. Okay, summary of digestion. तो ये टेबल रट लिया जाए. नोज वाले की बात कर रही. बॉडी भी कहते हैं. सेक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं. सच में आप नोज वाले की बात कर रही. ज्ञानी लोग मजाक कुछ ऐसा ना करें, नहीं तो मैं सच मान लूँगी और मेरे को लगेगा कि ये सही फैक्ट है. क्योंकि अभी खुद से ज़्यादा तुम लोगों पे भरोसा है बायो के मामले में. मेरे साथ प्रैंक कर दिया आपने. वो भी वो भी सुबह सुबह. बताओ. सही में. ये याद करना होगा. ये याद है नहीं, याद करना होगा. चलो. द पेन ऑर्गन पार्टिसिपेटिंग इन डाइजेशन, लीवर. The main organ participating. This is the largest gland of human body. It's weight around 22. लार्जेस्ट गलैंड. मेरी मम्मी उठ गई है. मतलब इसका मतलब मेरी मम्मी इसी टाइम में उठती है. मेरे को लगता था आज तक मम्मी शो ऑफ करती है कि नहीं, मेरा तो नींद सुबह सुबह उठता है 4 बजे. दिस इज द लार्जेस्ट. मतलब उठी होगी पहले, अभी काम वगैरह स्टार्ट कर रही है, मंदिर जा रही है, ये कर रही है. ओके. This is the largest gland of human body. It weight is approximately 2 kg. Bile is secreted through the liver only. Bile is secreted through the liver only. इससे पहले क्या था? गॉल ब्लैडर से क्या था? कुछ तो था गॉल ब्लैडर वाला. कुछ तो था अभी, कुछ देर पहले पता था. गॉल ब्लैडर से भी कुछ था. अच्छा. स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. तो इतने बच्चे वाले फैक्ट्स में कंफ्यूजन है. बाइल स्टोर्ड इन. शमा कहे परवाने सुन. चलो ठीक है, हो गया. This bile accelerate the reaction of enzyme present in the intestine. Liver converts excess of amino acids into ammonia by deamination. Deamination. What is this? Okay. This ammonia are further converted into urea by ornithine cycle. Urea comes out from the body through kidney. Liver converts some quantity of protein into glucose during deficiency of carbon dioxide. तो converted protein into glucose. Okay. In carbohydrates, metabolism
9 to to स्टोर इन गॉल ब्लैडर, हाँ अभी देखा, इन ह्यूमन समथिंग 4 to 5 लीटर्स, 4-5 लीटर थे क्या। और बस इतना याद है कि फीमेल्स में 1/2 लीटर कम होता है ब्लड। कुछ ज़्यादा नहीं होंगे ना। नहीं, मेरे को ये नहीं पता कि बाइल जूस कितना होता है, एक्चुअली ब्लड का भी याद नहीं है। शायद 4 to 5 लीटर्स था, पता नहीं, दोबारा देखना पड़ेगा। 5 to 6 लीटर्स, ओके। और फीमेल्स में 1/2 लीटर कम होता है ब्लड मेल से, ये मेरे को याद बस हो गया। पता नहीं, तुक्का मारा, तुक्का मत मारा करो, तुक्का मत मारा करो मेरा प्लीज। ये तुम्हारा एग्जाम नहीं है तुक्का मारने के लिए। बेटा किस टाइम से तुक्का मारने वाला वो छोड़ दो। तुक्का गलत है, नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स कट। अभी से आदत लगाओ इसको, नेगेटिव काटने का। भाई एक लड़की यहाँ पे पढ़ रही है, कितने सालों बाद वो बायो पढ़ रही है, और तुम लोग तुक्का लगा के कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ, तुम लोग नहीं, अभिजीत कर रही है। प्लीज मत करो, नहीं तो मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। इन कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, पता चला यही एग्जाम में याद आ गया कि 22-9-10 लीटर होता है। इन कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म कहा था। Carbohydrate metabolism, liver converts the excess of the glucose found in blood into glycogen. So excess glucose क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। Carbohydrates excess glucose found in blood into glycogen and stores it into hepatic cell. What is this? As reserve nutrients. दो लोगों का ब्लड बता दिया। नहीं, वो गॉल ब्लैडर में कितने बाइल स्टोर होते हैं वो बता रहा था। ओके, बाय बाय, जाओ पढ़ाई करो या जो भी अपना रूटीन है वो करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे दिस ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच। एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अब को पता नहीं दिन में नींद आने वाली है। आप जो, व्हाट इज दिस, आप जो, अब बता के जाओ। आप जो मतलब आना हो जाएगा मेरे दिमाग में। ये बिहारी भी पूछ रहा मतलब बाय। अच्छा, आप जो मतलब बाय, वाह, वेरी नाइस। आप जो मतलब इट शुड बी जाप जो। उल्टा सीधा मत। गुजराती है वो, हमारी पटेल साहब गुजराती हैं। आप जो मतलब आना, फिर मिलेंगे, और जाना मतलब फिर क्या होगा। हाँ, अच्छा फिर मिलेंगे मतलब चलो आते हैं, ऐसा करके होगा आई गेस। चलो फिर आते हैं या फिर मिलते हैं इस बार। ओके स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
नहीं भाई, फिर आई गेस कल से फिर मेरा वो प्लान हो सकता है कि इस टाइम पे करने का, बट आई एम नॉट श्योर. The necessity of glucose arises the liver. कहाँ थे फिर? As a reserve nutrients in carbohydrates. अभिजीत, आपको भी पढ़ाई करनी होगी तो आप जा सकते हैं, इट्स ओके. सुबह नींद ही नहीं खुलती, हाँ वही. आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप तो सीआईडी में सीआईडी. और तू क्या दया बहन? दया हो तुम? अरे मेरे दिमाग में तो अभिजीत नाम सुन के पहले दिन मेरे दिमाग में भी ये आया था. क्योंकि अभिजीत एक ही है वो सुना हुआ, बाकी मेरी लाइफ में आज तक अभिजीत नाम का कोई नहीं आया था. तो नहीं, अभिजीत और दया है ना ग्रुप, तो उसके दिमाग से मेरे दिमाग में दया बहन आ गया. अच्छा, 5 ही बज गए हैं क्या? ओके, सो वी आर अगेन ऑन अ ब्रेक टाइम, बट स्टिल आई विल कंटिन्यू. The necessity of glucose arises. ये हो गया. um, कहा था? कुछ तो गड़बड़ है यार, दरवाज़ा तोड़ दो. नहीं नहीं, सुबह सुबह दरवाज़ा क्यों तोड़ना? इधर ऐसे the liver converts reserve glycogen into glucose. ब्रेक में भी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मेरा मन नहीं है ब्रेक लेने का. The necessity of glucose arises the liver converts reserved glycogen into glucose. Liver converts the reserved glycogen into glucose. इससे पहले क्या था? liver convert प्रोटीन into ग्लूकोज. ठीक है, लिवर कन्वर्ट रिजर्व ग्लाइकोजन, हाँ तो वही प्रोटीन जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है, और जब नेसेसिटी होती है तो फिर वो ब्लड में दे देता है. ओके, इन केस ऑफ द डिक्रीज ऑफ फैट इन फूड, लिवर कन्वर्ट्स सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू फैट. है कार्बोहाइड्रेट्स इनटू फैट, ओके. फूड लिवर कन्वर्ट्स, ठीक है. मेरा भाई बोल रहा था कि लाइक बॉडी कुछ भी जनरेट कर सकता है, लाइक प्रोटीन भी कर सकता है खुद से, फैट भी कर सकता है, कुछ भी में कन्वर्ट कर सकते हैं. किसमें गड़बड़ है? तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? कहाँ गड़बड़ है? Carbohydrate. The production of fibrinogen protein takes place by liver, which helps in clotting the blood. The production of अच्छा, प्रोडक्शन ये ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रोटीन जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करे. हाँ, अभी तो बात हुई थी इसके बारे में. ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन होता है, यही तो था. यही था. द कंपल्सरी प्रोटीन इन मेकिंग. वाह.
The production of heparin protein takes place. मेरे को ये हटा देना चाहिए ब्रेक वाला, मतलब 5 AM ब्रेक वाला हटा देना चाहिए। कैसे हटेगा? अब 6 बजे तो एंड ही हो जाएगा सेशन। फिर 7 से 10 कर लेंगे, नहीं 7 से 9 ऐसे कर लेंगे, मतलब रटने वाला। और उसके बाद देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ हेपरिन प्रोटीन टेक्स प्लेस इन लीवर विच प्रोहिबिट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी। अच्छा, ये ऑब्स्ट्रक्शन है एक तरीके से। Protein takes place in the liver, so it takes place in the liver. Which protein? Heparin protein takes place in liver, which prohibit the clotting of blood inside the body. The dead RBCs destroy the liver only. The liver reserves some quantity of iron, copper, and vitamin. It helps in regulating the body temperature. What liver, na? Liver is an important clue in investigating a person that has been due to poison in food. Okay, gallbladder. Gallbladder is a pear-shaped sac in which the bile coming out of liver is stored. Bile coming out, हाँ ये तो अभी बात हुई ना कि स्टोर करता है एक तरीके से. Bile comes into duodenum from gallbladder through the bile duct. ठीक है, secretion of bile into takes place by reflex. The secretion of bile into duodenum takes place by reflex action. Bile is a yellowish green colored alkaline. So इसका pH है 7.7, which we were discussing पहले कि इसका pH क्या है 7.7. The quantity of water, हर जगह water की quantity ज़्यादा है. The quantity of water is 85% and the quantity of bile pigment is 12% in water. Okay. इसमें टोटल क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, क्या लीटर्स में नहीं दिया है? लीटर्स में बाइल का नहीं दिया है. ओके. द फंक्शन ऑफ बाइल आर एज अंडर. इट मेक्स द मीडियम ऑफ फूड अल्कलाइन so that the pancreatic juice can work. It kills the harmful bacteria coming with food, emulsifies the fat, so it emulsifies the fat as well. It accelerates the bowel movement of intestine by which digestive juice in the food mix well. It is helpful in absorption of vitamin K. So absorption of vitamin K में भी help करता है and other vitamins mixed into in fats. In case of the obstruction in bile duct, liver cells stop taking bilirubin from blood. What is this? In obstruction in the bile duct, liver cells stop taking bilirubin from blood. As a result, spreads throughout the body. This is called jaundice. Okay. The jaundice is because of the obstruction in bile duct. Something new for me. Obstruction in bile duct से क्या होगा? Jaundice होता है. Okay, pancreas. It is the second largest gland after liver. It acts as simultaneously endocrine और exocrine दोनों हैं ये. Endocrine में इंसुलिन निकालता है और एक्सोक्राइन में कुछ तो ऐसा था. Pancreatic juice, I guess.
Pancreatic juice secretes out of it, in which 9.8% water and the remaining parts contain salt and enzymes. Pancreatic juice is alkaline, pH value is 7.5 to 8.3. It contains the enzyme. Um, it contains the enzymes which can digest all the three types of food materials like carbohydrates, fat. So pancreatic juice can digest all three types. Okay, therefore it is called complete digestive juice. अच्छा. ओके. सो पैनक्रियाटिक जूस में मतलब तीनों, इसलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस. Slate of Langerhans. This is part of pancreas. It was discovered by medical scientists. Okay, from its B cell insulin. Ha 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 ha. From beta cell insulin and alpha cell glucagons, and from gamma somatostatin hormones are secreted. Insulin is secreted by beta cells of isolates of which are part of pancreas. It was discovered by Bantic and Best. ये question आ चुका है. This is a factual question. और ये question आ चुका है. It was discovered by whom? It controls the process of making glycogen from glucose. It controls the process of making glycogen from glucose. Okay. Not glycogen, making glycogen from glucose. मतलब जो एक्स्ट्रा वाला है. डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. ठीक है, ये तो पता है. एक्सेसिव फ्लो ऑफ इंसुलिन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया. एक्सेसिव फ्लो में in which one loses the reproducing capacity and vision deterioration. Glucagon, it reconverts glycogen into glucose. ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा. ग्लूकागोन. ग्लूकागोन कैसे, कहाँ से आ रहा था? अल्फा वाले से. बीटा सेल से इंसुलिन आ रहा था और इससे somatostatin. This is a polypeptide hormone. What is polypeptide? This increases the duration of assimilation of food. What is polypeptide? Hormone which increases the duration of assimilation of food. Okay. Polypeptide hormone which increases the. पॉलीपेप्टाइड क्या है? स्ट्रक्चर है क्या कुछ? पॉलीपेप्टाइड आई गेस स्ट्रक्चर ही है कुछ. पॉलीपेप्टाइड. चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. ठीक है. Polypeptides fall to a chain of independent by peptide bonds. Protein digestion polypeptides are carbohydrates नहीं. Peptide bond is. ठीक है. It's a chain of amino acids. Peptide bonds. Okay. जो तू मेरा हमदर्द polypeptide. Chain of amino acids. Circulatory system. The discovery of blood circulation was done by William Harvey in year 1628. There are 4 parts under it.
ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाज माय फेवरेट, मतलब सबसे इजीएस्ट हुआ करता था और बहुत मज़ा आता था ये पढ़ने में स्कूल टाइम में। स्कूल टाइम में एक्चुअली बायो वाज माय मोस्ट फेवरेट, मैथ्स और बायो पैरेलल में थे एक्चुअली। There are four part veins and blood. Blood is a part of circulation the heart. It remains safe pericardial membrane. It remains safe and it weighs approximately 300 gram. 300 grams. 300 ग्राम का दिल है हमारा। इतना छोटा heart. It remains safe in pericardial membrane. That's named. The weight of the heart of human is made up of four chambers. Pata hai. In the anterior side, there is the right auricle, left. Between the right auricle, there is a valve, tricuspid valve. Between the left left and left ventricle, bicuspid. What is this? Tricuspid. What is this? I don't know. I think I should search it. Valve. Tricuspid valve, clear, concise, and exam-oriented. What is the tricuspid valve? Clear, Tricuspid. concise, and exam-oriented. What is the tricuspid valve? Open quote. The tricuspid valve is a right atrioventricular AV valve present between the right atrium and right ventricle of the heart. Close quote. Why is it called tricuspid? It has three cusps, flaps. Cusps are attached to chordae tendineae, papillary muscles, and... Thank you so much. Tricuspid valve lies between. अभी ये cusp क्या है? What is cusp? Cusps. वो तो ह्यूमन हार्ट में, हाँ आई एम स्टडिंग ह्यूमन हार्ट ही। एक्चुअली आई एम स्टडिंग सर्कुलेटरी सिस्टम राइट नाउ, तो उसमें ही आ गया है ट्राइकस्पिड वाल्व। व्हाट इज ट्राइकस्पिड वाल्व? सो आई एम सर्चिंग दैट। ट्राइकस्पिड इज मतलब cusp are thin flap-like projection of heart valve that open and close regularly. So is it something like 3 layers or what? Tricuspid में 3 cusps. Cusps are like flap, like structure of heart valves. 3 cusps. यार समझ ही नहीं आ रहा कस्प क्या है। खैर तो कुछ पूछने वाला नहीं है। अब नोट चाहिए 6th तक का और बहुत शॉर्ट। अच्छा एनसीईआरटी वाली? हाँ दे, कैसे दोगे? समरी नोट्स हैं तुम्हारे? Cusps are thin flap-like made of fibrous connective tissue. अभी एक्चुअली ये है ना कि जैसे मान लो कि नोट्स जो होता है वो सब अपने तरीके से बनाते हैं। अच्छा ऐप से, हाँ तब कर सकते हैं।
क्योंकि मेरा ना बहुत साल एक्चुअली साइंस पढ़ा नहीं है बहुत साल से, तो बहुत बेसिक चीज़ें भी दिमाग से जा चुकी हैं, तो उसमें सारे नोट्स अवेलेबल हैं। हाँ, अगर बहुत प्रिसाइज नोट्स होगा तो चलेगा, बट ज़्यादा ये नहीं है, मतलब जैसे क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बीपीएससी में, कि लूसेंट जो बुक है उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एवरीवन सजेस्ट कि लूसेंट से जो भी है, बिकॉज ये भी समरी काइंड ऑफ ही है। देख रहे हो सारे चैप्टर्स छोटे छोटे से हैं, और सारे चैप्टर्स मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दी हुई है। तो बस वो मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है अभी, तो मतलब टाइम की वजह से वो क्यूरोसिटी को बिठाना पड़ता है कि भाई दिमाग मत लगाओ इतना। ये कभी नहीं पूछेगा कि कस्प क्या होता है, बट मेरे दिमाग में कि ट्राई कस्पिड में कस्प क्या है, तो मेरा मन ही ऐसा है क्यूरियोसिटी वाला। बाकी इतना डेप्थ नहीं आता है क्वेश्चन। हेलो मच्छर। लेकिन हाँ, ऐप तुम बता देना कभी मेरा ऐसे हुआ कि रनिंग वे में कुछ नोट्स पढ़ना है, तो तुम ऐप बता सकते हो, आई विल नोट इट डाउन। उधर चले जाओ। हाँ, तुम नोट वो बता दो, ट्राइकास्पिड सेपरेट करता है, हाँ वो तो समझ आ गया कि ट्राइकास्पिड सेपरेट करता है, वो वाल्व है तो सेपरेट ही करेगा। लेकिन इसमें है कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड है, और इधर है ट्राइकस्पिड, तो आई थॉट कि ये कस्प क्या है, लेयर है कुछ ऐसा, कि मतलब लेयरिंग है, क्योंकि उसमें एक है ट्राइकस्पिड एक है बाइकस्पिड, तो वही मेरे दिमाग में कंफ्यूजन हो। अब फिर मेरे दिमाग में कि ऐसा क्यों है, मेरे दिमाग में ऐसा चलते रहता है, सेपरेट करता है, राइट। हाँ, लेकिन चलो ठीक है, दिमाग को विराम देते हैं और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसा क्यों है भाई, लेफ्ट में दो ही क्यों है, राइट में तीन क्यों है, बट let it be. Okay, the blood vessels carrying the blood from the body. The blood vessels carrying the blood from the body towards the heart is called vein. Vein carrying the blood from the body towards the heart. और आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड को निकालता है ना, फ्रॉम बॉडी टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। इन द veins there is impure blood, carbon dioxide mixed blood, हाँ ठीक है पता है impure होता है। its exception is pulmonary vein which always carry pure blood. Okay, pulmonary vein carries the blood from um, lungs to left auricle. It has pure blood and lungs to left auricle. अच्छा, and it has pure blood. कैसे प्योर हो जाएगा? अगर वो अभी कैरी करके ले जा रहा है तो वो प्योर कैसे हो? कैरी द ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल, but purification कैसे हो जाए? It has pure blood. The blood vessel carrying the blood from the heart towards the body is called, हाँ, from heart towards the body is called। अब दिमाग में मेरे एक और क्वेश्चन आ गया। ऐप का नाम है एलिन, ब्लू कलर का होगा, ठीक है, और मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ। आफ्टर माई सेशन आई विल सर्च इट। क्या है? एलिन ऐप, ठीक है। अब दिमाग में मेरे क्वेश्चन है कि
पल्मोनरिटी क्या बोलते हैं इसको? हमें सब वो हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है बोलने में। पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड कैसे जाता है लंग्स से हार्ट में? वो प्योरीफाई कैसे हो जाता है बिना हार्ट में जाए? वेन supplies pure blood from lungs to heart. How does purification is done even before getting into heart? Okay. Yes, the statement is correct. Your doubt is very logical. पहले ये तारीफ करेगा. चैट जीपीटी हमेशा मोटिवेट करता है पहले. Let's clarify. Pulmonary vein carry pure oxygenated blood from lungs to heart. The pure is oxygenated. They carry oxygen-rich blood to left or atrium. Pure blood is oxygenated, not filtered or clean. अच्छा हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. It simply means high oxygen and low CO2. ओके और बाकी वेन्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रीच ले जाते हैं और ये ज़्यादा ऑक्सीजन रिच ले जाता है. मेरे दिमाग में तो यही समझ आ रहा. Deoxygenated. This is exception. Purification blood occurs in lungs, not in heart. अच्छा 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 अच्छा. ओके. When carry oxygenate. बताओ इतना बेसिक सा मेरा कंफ्यूजन भाई. Purification of blood occurs in lungs and not in heart. Pulmonary vein carry oxygenated blood to the left atrium. Gas exchange occur at alveolar. Heart oxygenates blood. Purification means removal of urea. वो किडनी में होता है और pulmonary vein carries impure blood. Okay, got it. हाँ ठीक है मैं यूज़ करूँगी. In artery there is pure blood. From heart towards the body is called artery. In artery there is a pure blood, oxygen mixed blood. Its exception is pulmonary artery. वो deoxygenated blood को ले जाता है. From heart to what? Lungs. हाँ हार्ट टू लंग्स ठीक है. अभी को लग गई है प्यास. Artery carries the blood from right ventricles to lungs. Right ventricles to lung. It contains impure blood. In the right part of heart there remains impure blood, carbon dioxide mixed blood, and in the left part of the heart there remains pure blood. Okay. राइट में प्योर होता है, लेफ्ट में प्योर ब्लड होता है. ठीक है. The artery carrying blood to the muscles of the heart are called coronary arteries. The carrying blood to muscles of heart are called coronary arteries. Any type of hindrance in it causes heart attack. Okay. Course of circulation.
Mammals have double circulation. It means blood have to cross 2 times from heart before circulating through the chambers की बात हो रही है यहाँ पे. Double circulation blood have to cross 2 times from the heart before circulating through the body. Right auricles receive impure blood from the body, which goes into right ventricles. From here, the blood went to pulmonary artery, which sent it to the lungs for purification. हाँ याद आया. एक्चुअली मेरे को डायग्राम ही देख लेना चाहिए, ज़्यादा इजी हो जाता मेरे लिए. हार्ट नहीं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डायग्राम. स्कूल टाइम में ना वो मिला था, प्रोजेक्ट मिला था बनाने के लिए, और मेरा वाला जो हार्ट और वो डायग्राम था वो क्लास में लगा था. और सोचो आज इस लड़की को हार्ट याद नहीं है. But that's okay. तुमको बनाऊं कि पल के बचाऊं कदम तुम. गड़बड़ हो गई गड़बड़. मेरा पीडीएफ सेव नहीं हुआ होगा. मम्मी प्लीज ऐसा मत करना यार. अगर ये नहीं हुआ होगा तो क्या होगा. माय गॉड, प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज मत करना. शिट यार, थैंक गॉड हो गया. वो साल हो गया ना इसलिए. हाँ इसीलिए. अभी पता है मेरा पीडीएफ अपने आप वो बैक हो गया, और मेरे दिमाग में आया कि यार इतने देर से जो हाईलाइट हो रहा था वो कहीं मतलब गायब ना हो जाए, क्योंकि एक्सीडेंटली ऐसे बंद हो जाता है पीडीएफ ना, तो मेरे हाईलाइट्स गायब हो जाते हैं. मेरा तो हार्ट डर गया था बेचारा. कहाँ था. पल्मोनरी आर्टरी से. ये गंदा सा डायग्राम है. अच्छा डायरेक्शन है यहाँ पे. ठीक है. पहले राइट में आया. कहाँ आ रहा है. लंग्स. ये तो दिखाई नहीं रहा आने का, उल्टा सीधा है. आया फिर गया. टू पल्मोनरी वेन्स. एक लंग्स में जाएगा. समथिंग. कोई डिटेल में नहीं दिया हुआ. ठीक है. राइट राइट. फिर ये लंग्स में जाएगा फॉर प्योरिफिकेशन. पल्मोनरी आर्टरी. वेन. अच्छा. उसके बाद क्या करेंगे. लंग्स पे जाता है, उसके बाद वापस आता है, फिर यहाँ पे प्योर होते हैं, और उसके बाद बॉडी में aorta, blooding the oxygenated blood, oxygenated
और ये फिर क्या करेगा, पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड फिर से लाएगा, पंप करने के लिए एक तरीके से, है ना। ठीक है। सेक्शनल व्यू यही तो है, यही तो स्कूल में पढ़ाते हैं। हाँ ठीक है, समझ आ गया। हमने दिल को समझाया, टा टा टा। The artery carrying blood to the muscle of heart recorded any time goes with mammoth and down circulation through blood trapped across two trends from the heart's right auricle receive impure blood from the body, which goes into right artery from the blood went into pulmonary artery, which send it to lungs for purification. Oh, deoxygenated blood वाली बात. Then after purification, it is collected by pulmonary vein, which bring it back to the heart in left auricle. From left auricle, it went on now it purified and went to the aorta for different organ of the body. This circulation is done as a cardiac cycle. Cardiac cycle rhythmic systole, contraction, and diastole relaxation of auricle and ventricle constitute a cardiac cycle. Heartbeat keep beating rhythmic throughout. There is a node from which originate contraction of heart. SA node, SA node, and AV node. Are you aware of this? SA node and AV node, NODE. It is a specialized area of cardiac muscle fiber in right auricle. It is specialized area of cardiac muscle fiber in right auricle. अच्छा, ये right auricle में होता है. Cardiac muscle fiber in right auricle. As node is also known as pacemaker, as it generates each wave of cardiac impulse. ये 10 तक नहीं था SA node के बारे में. Auriculo, what is this? Ventricular node. What is this ventricular node? AV node is present close to intraatrial septum near the right AV aperture. पता नहीं ये सब क्या. Maybe the contraction is picked up by AV node, which spreads through. So it generates, SA node generate करता है और ये spread करता है. बस wave of excitation is picked up by AV node, which spread through AV bundle of muscle present in the okay. Artificial pacemaker. When SA node becomes defective or damaged, the cardiac impulse do not generate. This can be cured by surgical grafting of an artificial pacemaker, an electric device in the chest by of the patient. मेरे को तो डर लग गया सुन के. Electric device in the chest of the patient. It stimulates the heart electrically at regular intervals.
Systole and diastole of the heart are collectively called heartbeat, ठीक है. In the normal condition, the heart of human beats 72 times, and in a single beat, it pumps approximately 70 ml blood. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. The blood pressure, ठीक है, ये भी पता है. Thyroxine and adrenaline are the hormones which independently control the heartbeat. Okay. The CO2 present in the blood accelerates the heartbeat by reducing the pH. So CO2 reduces pH of blood. Lymph circulatory system. The light yellow fluid found in the intercellular intervals between the different tissue and is called lymph. क्या है? The light yellow fluid found in the intercellular intervals between different tissues and cells is called lymph. एक बार शकल देख लूँ मैं. जो lymph nodes वगैरह होते हैं वही ना. मेरे स्कूल टाइम में मतलब तब सब लोग फ़ोन नहीं यूज़ करते थे, मतलब बच्चे तो नहीं करते थे, मम्मी पापा लोग के पास था. तो ऐसे विजुअलाइज करना मतलब मन में ही होता था हमारे. कैसा लग रहा है ना, जब पुराने ज़माने की बात हो रही है. लिम्फ नोड्स. जब कोई कुछ अलग फैक्ट बता दे तो लगता था अच्छा ये भी होता है, ऐसे होता है. दिमाग में ही सब चलता था. और ये बात है 2015 की, 10 साल पहले. I was in 10th class. The light yellow fluid found under the lymph is a fluid whose composition is like blood plasma in which nutrients, oxygen, and various other substances are present. Lymph is a fluid whose composition is like blood plasma in which nutrients, oxygen, and various the आपने 10 साल पहले बोर्ड दिया था. हाँ, ट्वेल्थ नहीं, 10th बोर्ड 10 साल पहले दिया था. 12th मेरा 2017 में हुआ. तो अभी ऐसा लग रहा है कि यार बहुत साल हो गए. 10 साल भाई. सोचो हम लोग ना मतलब बचपन में डिक्शनरी, वो पेज वाले डिक्शनरी से वर्ड्स खोजते थे. 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है यार दुनिया. सोचो पेज वाली डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग ढूंढना. मतलब हमारे सर लोग देते थे वो हार्ड वर्ड चूज़ करने के लिए, तो फिर हम लोग वो करते थे लाइक पेज वाले डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग चूज़ करते थे. सॉरी. जो तुम्हारे बचपन में भी था, मतलब तुम 1 क्लास में होगे तब, 1 या नर्सरी में. सोचो कितना ज़्यादा चेंज हो गया 10 साल में. अब वीडियो से लोग क्लियर कर सकते हैं.
हम लोग पेज पलट के वो मिलाते थे कि कहाँ है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ काइंड ऑफ। अजीब सा लग रहा ना। दरअसल मैं तो यूकेजी में तो, तो यूकेजी में तुम डिक्शनरी देखते थे पागल। सॉरी, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, यूकेजी में तुम डिक्शनरी देखते थे। अरे मेरे को वो फ्लो फ्लो में भाई वाला आ गया मेरे मुंह से, मतलब भाई लोग कैसे बुलाते हैं ना, तो वो आ गया। Lymph is a fluid whose composition is like blood plasma, in which nutrient, oxygen, and various other substances are present. The please बुरा मत मानना. Lymph flows only in one direction, from tissue towards heart. Lymph flows only in one direction, from tissue towards heart. पापा देखकर पढ़ाते थे, अच्छा हाँ तब ठीक है। Function of lymph. The lymphocytes present in lymph helps to prevent the body from disease by killing the harmful bacteria. The lymphocyte present in the lymph helps to prevent the body from disease. अच्छा ठीक है, जैसे WBC, WBC इनफैक्ट अच्छा lymphocytes, हाँ इसका ही तो नेम होता है। Lymph is a fluid whose composition is very clear in which nutrients and in fact these are WBC. Lymph flows only in one direction. The lymphocyte present in lymph helps to prevent from disease by killing harmful lymph form. हाँ नहीं, तुम जिस दिन से वो कमेंट किए हो ना कि आप परी बहन जैसी है मेरी, उस दिन पता नहीं मेरे मन में फीलिंग आ गई, तो तुम्हारे वो वाली चीज़ खेली कि भाई टाइप का वो वाइब आ गया। और तुम ऐसे टेक्स्ट भी करते हो, मतलब अच्छे से काइंड ऑफ रहते हो, तो ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा फेमिलियर सा फील होता है, इसलिए निकल गया। आई एम सो सॉरी, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। आई एम सॉरी फॉर सेइंग दैट। Internet is not for me, I guess. Function of lymph. Lymphocytes present in lymph helps to prevent the body from disease by killing the harmful bacteria. ये तो हो गया था. Form the lymphocyte. The node found in lymph vessels are called lymph node. Works as a filter in human body. Lymph helps in healing the wound. अच्छा ठीक है. Lymph are differentiated from tissues to veins. Excretory system. सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ रहे हैं। टाइम कितना हो गया? 5:45। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फंक्शन अभी लग रहा है कि उस ब्रेक टाइम में ब्रेक ले लेना चाहिए था। The lymphocytes present in the lymph helps to prevent the body from disease by killing, ये तो हो गया ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम अब स्टार्ट करते हैं। Excretion, removal of nitrogenous substance formed during metabolism from the body of human is called excretion. Normal excretion means the release of nitrogenous excretory substances like urea, ye wo. The main excretory organs are skin, liver, and lungs. Kidney, the main excretory organ in the human and other mammal pairs of kidney. It weighs around 140 gram. There are two parts of it. Outer part is called cortex and inner part is called medulla. So एक किडनी में भी दिमाग है, medulla. Each kidney is made up of ethnoduct which are called nephrons.
Nephron is the structural and functional unit of kidney. भी लोग मिलते हैं, मुझे बाद में पता चलता है कि वो कोई मेरे रिलेटिव। हाँ, तुम जब पहली बार वो टेक्स्ट किया ना, तो मतलब वो मैं जो भी था चैट या कमेंट, तो मेरे को लगा कि कोई मेरा ही है, क्योंकि ऐसा ही होता है। Each kidney is made up of approximately, बट फिर याद आया कि नहीं, रिलेटिव्स तो ज़्यादा कमेंट नहीं करते, मतलब दे डोंट इंगेज दैट मच। तो चलो ठीक है, जो भी है। Each kidney is made up of approximately, ये तो हो गया नेफ्रॉन वाला। Nephron is structure and functional unit of kidney. There is a cup like structure in every nephron called glomerulus of thin blood vessels are found in Foreman capsule, which is made up of two types of हो सकता है। रोहतास में हमारे तो रिलेटिव्स नहीं हैं कोई, बट दूर के रिलेशंस हो सकते हैं। भोजपुर तक है हमारे रिलेटिव्स, रोहतास का आई एम नॉट अवेयर। मम्मी को शायद पता, आई एम नॉट अवेयर। ग्लोमेरुलस ऑफ थिन ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन, ये हो गया। Is made of a tubular afferent arteriole which carries the blood to glomerulus. Afferent arteriole by the blood is taken out of the, ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं हो गया? This is made of tubers. ठीक है, ठीक है। Process of filtration of liquids into the cavities for ultrafiltration. The main function of kidney is purification of blood plasma, that is to excrete the unwanted nitrogenous waste substance through urination. तो purification of blood plasma, हाँ सारे blood को करता है ना, तो वो हो गया। The supply of blood to kidney takes place in large quantity in comparison to other blood to kidneys take place in large quantity. Okay, in the kidney average 125 ml per minute blood is filtered, that is 180 liters per day. Kidney filters 180 liters per day. एक मिनट, in the kidney average 180 liters blood is filtered है? ब्लड तो 5 लीटर ही था, 5-6 लीटर ही था। 180 लीटर कैसे फिल्टर हो रहा है? क्या है? हो गया मेरे दिमाग में कंफ्यूजन। आई नो बहुत सिली सा होगा, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। क्या है ये? क्यों है ये? वेयर इट इज, वेयर इज इट? द एवरेज, देयर इज एवरेज 5-6 लीटर्स, तो 180 लीटर कैसे फिल्टर हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मेरा नहीं घर है भोजपुर में। हाँ, तुम्हारा रोहतास में है, तुम्हारा घर रोहतास में है। आई सेड कि रोहतास में मेरे रिलेटिव्स हैं कि नहीं है, ये मेरे को नहीं पता, शायद मम्मी को पता हो। आउट ऑफ इट ड्यूरियन इज फाउंडेड। ये क्या कर रहा है यार?
The remaining is absorbed back by the cell and mixed into blood. I think it's talking about water. क्या नहीं समझ आ रहा क्या है ये. देखो there is a statement कि in kidneys average liters blood is filtered. ठीक है. ये क्या लिखा हुआ है. ये गलत लिखा हुआ है या मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है. 180 liters of blood is filtered. What is this? 180 liters water की बारे में बात कर रहे हैं क्या. 180 liters of about is formed per day. 180 liters of blood is filtered formed per day is 180 liters. Whole blood is filtered. अच्छा. Kidney one glomerular filtrate per day. Filtrate form per day is 180 liters. हाँ, ब्लड के साथ अदर वेस्ट मटेरियल भी फिल्टर होते हैं. यूजफुल एंड वेस्ट मटेरियल भी होते हैं ब्लड के साथ. हाँ बट ये स्ट्रेटली लिख रहा है ना कि 180 लीटर ब्लड्स आर फिल्टर्ड. 180 लीटर ब्लड है इंसान के अंदर तो 4-5-5-6 लीटर में ऐसा. तो यहाँ पे लिख रहा है कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. एंड ये मतलब बुक्स ऐसे ही लिख देते हैं लूजली जो होता है ना, लिख देते हैं फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे इज 180 लीटर्स. अभी ये क्या है. किडनीज फॉर्म approximately 180 liter of glomerular filtrate per day. Blood cells. What is the correct statement then? बैकग्राउंड में क्या चल रहा. हनुमान चालीसा. तो कहीं कॉपीराइट ना लगा दे. About 180 liters of glomerular filtrate is formed per day in the kidneys. तो अभी मेरा अलार्म बज रहा है. Kidneys do not filter whole blood. Only plasma is filtered at glomerulus. Blood cells and plasma protein are retained. दोनों आते हैं. ओके. To filter 180 liters of whole blood pulses into nephron. क्या हो गया ये. About 180 liters of glomerular filtrate is formed per day in the kidneys from blood plasma. Till whole blood. Okay. Filtrate 180 liters. More than 99 kilometers will reabsorbed. अच्छा 99% ज़्यादा वो reabsorb हो जाता है. मेरा गला खराब हो गया. वजन हो रहा है सुबह सुबह.
माँ जानकी की धरती पे। हाँ, डेली होता है, 7-8 बजे तक ये चलते रहते। अभी तो दूर वाले मंदिर में हो रहा है, फिर पास वाले मंदिर में होगा, तो वो भी लाउड लाउड सा होगा। और आज मंगलवार भी है, तो कहा थे हाँ। टेल मी अबाउट दिस filterate. Glomerular filtrate is a fluid formed when blood plasma is filtered through the glomerular blood plasma and is filtrated. Filtrate is similar to plasma but without proteins. अच्छा, without proteins in cells. Okay. The fluid formed when blood plasma is filtered through the. Okay. और 99% वो absorb भी हो जाएगा, अच्छा लगता है. So it is talking about glomerular filtrate, जो फॉर्म होता है when blood plasma is filtered, ठीक है. और उसकी क्वांटिटी को ये 180 लीटर्स बता रहा है, जो कि 99% अब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब वापस अब्जॉर्ब हो जाता है. ओके, यहाँ पे लिख देना चाहिए आई गेस, क्लैरिफिकेशन काइंड ऑफ. अपन तेज सवारो. प्लाज्मा विदाउट एंड ये भी लिख दो ना कि 99% अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है. Mm-hmm. 99% get absorbed. छः बज गए हैं. वाह यार, मज़ा आया पढ़ने में, और मेरे को पता ही नहीं चला. मेरा तो अभी भी मन नहीं कर रहा सेशन ख़त्म करने का. आई थिंक आई शुड एक्सटेंड दिस सेशन 7 बजे तक आई गेस, बट अभी आई विल टेक अ ब्रेक, क्योंकि अब मेरा चलने का मन कर रहा है. अब ये है एक्सप्लेनेशन इन डॉक्स में देख लो ये. ओके, चलो ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और थोड़ी वॉकिंग कर लेते हैं. मुझे भी नहीं पता चला है ना, 2 घंटे हो गए यार, 2 घंटे. तुम भी पढ़ाई कर रहे थे साथ में, या फिर मतलब और कुछ काम भी कर रहे थे? ऐसे मत टाइम वेस्ट करना, मतलब पढ़ाई भी करते रहना. चलो, अभी बाकी हमारे 12 पेजेस बाकी है इसमें. 1 घंटे में हो जाएगा, हो जाना चाहिए. देखो क्या होता है, 5-5 मिनट में तो एक पेज नहीं होता,
लेकिन ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन और अच्छे से करेंगे। मैथ पढ़ रहा था। ग्रेट। तुम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हो? अच्छा तुम तो 10th में हो। हाँ नहीं, मेरे को लगा नीट एस्पिरेंट मैथ्स क्यों पढ़ रहा। ओह माय गॉड, 2 घंटे का सेशन हो गया। मजेदार है, मतलब दिन में अगर नींद में तो थोड़ी बहुत सो जाओ, लेकिन अच्छा लगा यार सुबह सुबह उठ के। तब तक दर्शन कर लीजिए। जी हाँ, हम आ जाएंगे। मैं अभी रूम से बाहर तो नहीं जा रही, बाहर छत पे ठंड है और बाहर ठंड है और मेरे को ठंड जल्दी लग जाती है। आई एम वेरी सेंसिटिव टू ठंड एंड गर्मी बोथ। देखो बर्ड्स भी बोलने लगे। सीरियसली यार, बहुत दिन बाद ऐसे सुबह सुबह उठ के बहुत मज़ा आया, लेकिन पता नहीं कल हो पाएगा कि नहीं। कल तक तो रूम पर ही रहे। पहले जब मेरा हॉस्टल वाला था ना टाइम, तो हॉस्टल टाइम में आई यूज टू वेक अप एट 4 AM। तो ये वाला मेरा सुबह सुबह वाला रूटीन हुआ करता था। बट फिर हॉस्टल ख़त्म हो गया मेरा वो, उसके बाद सब चेंज हो गया। तो ये एग्जैक्ट टाइम पे ये सारे बर्ड्स स्टार्ट हो गए। काऊ 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 कर रहे। महावीर मकर बजे जाए, कुमति निवार शुभ। आज मेरी नींद तो बिल्कुल एग्जैक्ट 3:00 पे खुली है, बिल्कुल 3 बजे। अरे पानी है मेरे रूम में, मेरे को लगा रूम में पानी ही नहीं है, प्यास लगी थी कब से। तुम डेली जगते हो उस टाइम पे? मेरा मेरे को दोस्त ने एग्जाम का सिलेबस 3 बजे सिलेबस पूछ रहे हैं। और इतना अवेयर है सिलेबस के लिए, तो वो अभी तक सिलेबस ही पूछ रहा है। हो जाएगा। हम लगातार मेरे अलार्म्स बजेंगे। 6:05 में हुआ, अभी फिर 6:10 में वो बजेगा। महावीर तो अच्छा 2 ही दिन एग्जाम, और 2 दिन पहले भी सिलेबस का याद आया। बोले ऐसे दोस्त होते हैं रियल में? मेरे को लगा बस मीम्स में ऐसे दोस्त होते हैं, रियल लाइफ में भी होता है। कौन सा एग्जाम चल रहा है तुम लोग का? थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मेकिंग माई 2 hours बिल्कुल फूल की तरह निकल गया मेरा 2 घंटा। 6 हो रहा है, 2-3 मिनट में स्टार्ट करते फिर से। प्री बोर्ड्स चल रहे। अच्छा अरे खुल जाए। There is a second person here. कौन है वो जो इतनी शांति से चुपचाप लाइव में है बट बोल नहीं रहा? आप भी बोल सकते हैं जो भी है। किस्मत, ओ माय गॉड, ऐसे मत बोलो। किस्मत से आप भी आज सुबह लाइव स्टार्ट करती। मेरा दिन अच्छा बन चुका है ऑलरेडी। ऐसे किस्मत बोल के और अच्छा बन जाएगा। सो देखो बाहर आवाज आ रही होगी ना, बाहर की आवाज आ रही होगी ना। यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं, दिन भर वो अलग अलग तरह की चिड़िया घूमते रहती है। कहाँ कहाँ? चलो ठीक है, आई एम फीलिंग बेटर, स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि इतनी आवाज के बाद भी नींद कैसे नहीं खुलती है। बट कहीं कल फिर वैसे ही हो जाए तो कुछ बोल नहीं सकते। बट आई विल ट्राई। आई विल ट्राई टू डू दिस। सुबह उठ के फिर से लाइव करूँ, बट देखो क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अभी मेरे को 12 पेज पढ़ना है। 12 पेजेस जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। आउट ऑफ कहाँ थे? किडनी पे थे ना। किडनी इन द किडनी एवरेज 125 लीटर्स। अरे वो जो ब्रेक वाला था वो हट गया, अपने आप हट गया। अपने आप नींद खुल जाएगी। सोच लीजिएगा कल सुबह एग्जाम है। तब नींद ही नहीं आएगी। क्या है 16? छोड़ो, ब्रेक वाले नहीं लगाते, 7 बजे ख़त्म ही कर लेंगे ब्रेक। चलो ठीक है। इन द किडनी एवरेज 125 लीटर। देखो मेरा प्लान था बस 2 घंटे पढ़ने का, लेकिन अभी शायद लाइव की वजह से या क्या, अभी मन कर रहा है कि नहीं थोड़ा और पढ़ लेते हैं ऐसा। तो ना आई गेट इट कि बाकी स्टडी ब्लॉगर्स क्यों लाइव कर रहे हैं। Out of it, 1.45 liters of urine is formed daily, and the remaining is absorbed. Back by the cells of nephron and mixed into the blood. ठीक है। Out of it,
Urine is formed. Final urine 1.5 liters. Out of filtration ना, filter होके out of blood after filtration. When arrived from the whole blood, urine is formed uh, from blood plasma by the process of filtration, reabsorption, and secretion in kidneys. Blood enters the kidney. ये वो urine is formed from. ठीक है. The remaining is absorbed back by the cells of nephron. अच्छा तुम डेली जगते हो क्या 7 बजे? अच्छा तुम्हारे दोस्त ने जगा दिया. ओके हाँ याद आया, तुम्हारे दोस्त ने जगाया. और तुम्हारी पढ़ाई भी हो गई. वाह. The remaining is absorbed back by the cells of nephron. In the normal urine, there is 95% of water, 12% of uric acid, and the color of urine is related to the presence of urochromes in it. Urochrome is formed by the कोई और भी पढ़ रहा है क्या हमारे साथ? Urochrome is formed by the dissociation of hemoglobin. Urine is acidic and pH is 6. pH is 6. Okay. Now the stone formed in the kidney is made up of calcium oxalate. ये previous year question में आया था, तो मार्क कर लो यहाँ पे. इसलिए तो बोला है किस्मत से आप भी 3 बजे जगे. हाँ नहीं अच्छी बात है यार, सुबह सुबह पढ़ाई हो गई हमारी. Oil gland and sweat glands found in the skin respectively secrete sebum and sweat. नहीं कल से आई विल पक्का ट्राई कि मतलब सुबह का जितना अर्ली पॉसिबल हो सके सेशन करने का. बिकॉज इट्स गुड एंड प्रोडक्टिव भी रहा. काफ़ी पेजेस मतलब मेरे कंप्लीट हो गए और समझ भी आया. ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर हाथ दिया है ऐसा, तो अच्छा भी लग रहा है. Oil gland and sweat glands found in the skin respectively. Sweat glands, oil glands respectively secretes sebum and sweat. Oil gland. Okay. Liver. Liver cells play the main role in excretion by converting more and more amino acids and ammonia. हाँ बिल्कुल ट्राई कर. और ऐसे लगेगा कि और भी लोग पढ़ रहे हैं तो शायद वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला चीज़ नहीं हो. एक्चुअली मेरे लाइफ का वन ऑफ द गोल ये भी है फ़िलहाल तो खुद के डिसिप्लिन के लिए है. फ़िलहाल ना व्यूज़ के लिए है, ना चैट्स के लिए है, ना फॉलोअर्स के लिए, कुछ भी के लिए नहीं. फ़िलहाल तो मेरा बस अकाउंटेबिलिटी के लिए है. लेकिन वन ऑफ द गोल मेरा ये भी है कि फ्यूचर में चल के एक तरीके से नहीं होता इन्वायरमेंट बनाना काइंड ऑफ, वो भी है. इट इज़ वन ऑफ द गोल. बाकी अभी तो खुद के लिए है कि बस इसी बहाने उतने देर इंसान बैठे.
Liver cells play the main role in excretion by converting more and more amino acids and ammonia of blood into urea. Liver cells play a main role in excretion by converting more and more amino acids and ammonia of blood into urea. The lungs excretes two types of gases. Thank you so much, Abhijit. The lungs excretes two types of gaseous substance, carbon dioxide and water vapor. Lungs excrete two types of gaseous substance, carbon dioxide and water vapor. हाँ ठीक है. Lungs excretes water vapor as well. The excretion of some substances like garlic, onion, and some species in which vapor components are there who excrete what is the lungs. Okay. Different animals and excretory parts. Is it important? हाँ याद तो करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं. हेमोडायलिसिस कितना टाइम हो रहा? इट इज़ 6:18. मतलब 40 मिनट है हमारे पास. तो 5-5 मिनट का वो लगाते हैं और एक पेज 5 मिनट्स में कंप्लीट करना है. वी विल ट्राई. बाकी ज़्यादा रश तो नहीं करेंगे. Okay, hemodialysis, the process of removal of excess urea from blood of patient using artificial kidney. तो ये artificial kidney वाली बात है. नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं. अंडर दिस सिस्टम थिन थ्रेड लाइक नर्व्स आर spread throughout the body after receiving the information of the environmental changes. ठीक है अभिजीत, अभी हम लोग ना 40 मिनट्स बिल्कुल फोकस्ड वाला करेंगे. और क्योंकि ये चैप्टर मतलब ये पूरा ख़त्म ही करना है अभी. 10 पेजेस जो बाकी है. ओके, 40 मिनट्स फुल फोकस. अगर म्यूट भी कर लेते हैं ना ताकि तुम भी डिस्टर्ब ना हो. ओके, डील डन. 40 मिनट्स बिल्कुल फोकस से पढ़ेंगे. ओके, ऑल द बेस्ट. 40 मिनट्स फुल फोकस. और टारगेट बना लो कि क्या कंप्लीट करना है 40 मिनट्स में, और उतना करने का पूरा ट्राई करते हैं. ठीक है. ओके, ऑल द बेस्ट. फिर 40 मिनट्स बाद बात करते हैं.
I hope it's going on good. माइक म्यूट है ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो. Is it okay to mute the mic or better कि बिना म्यूट के, मतलब धीरे धीरे बोल के बिना म्यूट के. Autonomic nervous system. Autonomic nervous system is made up of some brain nerves and some spinal cord. Spinal cord nerve, it supplies nerves to all the internal and blood vessels of the body. Autonomic nervous system is made up of some brain nerves and some spinal cord. Some spinal cord nerve supplies nerves to all the internal organs and blood vessels of the body. Therefore, prevented the concept of autonomic nervous system. There are two parts of autonomic nervous system. Okay. Function of sympathetic nervous system. It narrows the blood vessel in the skin by its function. Here gets erected. It narrows the blood vessel. क्या sympathetic nervous system narrows the blood vessel in the skin by its action. Here gets erected. It is the secretion of salivary gland. Peripheral. It reduces the secretion of salivary gland, increases the heartbeat. मतलब blood distance, including blood and everything. Just read it like so. Okay. Functional for parasympathetic nervous system. Functional the opposite of sympathetic. They have identical use of blood but it's painful. It increases the secretion of lava. तो ये क्या है? Opposite है. Opposite of sympathetic nervous system. For example, affects the nervous system collectively creates the existence of the skeletal system. The skeletal system is made of two parts. Okay. Made up of two parts. Exoskeleton, appendicular skeleton, skeleton which makes the main axis of the body is main axis. Skull हो गया, vertebral column, bones of the chest comes under it. There are 80 bones in the axial part. ठीक है. स्कल में कितना है? 29. वहाँ 28 दे रखा था. And out of this 8 bones jointly protected. 8 bones jointly protect. 8 bones jointly protect the human brain. The structure made of this brain is called forehead. The structure made up of this bone is called forehead. All the bones of the forehead remain joined strongly by the. There are 14 bones in addition to this which form the face. There are 40 bones in addition to this which form the face. Okay, so face में 14 bones. So 6 ears or 1 in point bone. What is hyoid bone? क्या होता है? Hyoid. Hyoid bone. Okay. The hyoid bone is a huge shaped bone located in the neck that supports the tongue and is located in the neck that supports the tongue and is associated with swallowing and speech. Only one bone that is not
articulate with any other bone suspended. ठीक है. The muscle and ligaments frequently associate lies the base of the tongue. Okay. The supports tongue, helps in speech, provides attachment for the body fluid. Derived from the second and third. Okay. Herbert is the only bone that does not articulate with any other bone that's supposed to give. Okay, ठीक है. So, the point bone is a used bone, tongue, and only bone. It is suspended by muscle and ligaments. Suspended muscle ligaments. Whatever call it, the particular column of human is made up of the column of human is made of 33 vertebrates. All of these vertebrates are joined by intervertebral discs. The vertebral is made of flexible by this interval we divide the into following parts. The first vertebra, which is made, is called atlas vertebra, holds the skull, holds the head. Okay, the vertebral column of the human is made cervical region, 7 vertebra, thoracic. थ्री का टोटल 33. ठीक है, 33 था ना, फिर हाँ 33 था. ओके. Its first vertebra, which is called atlas vertebra, holds the skull. So atlas vertebra holds the skull. They provide the base to the neck and body. It helps the human in standing, walking, and disease. It provides to the neck, provides protection to the spinal cord, the clear skeleton, and the following of bicycle, foot, with hands and feet. ठीक है, तो ये कुछ है. It is the part of A हो गया ना इसका. A is axial skeleton, B is appendicular skeleton. इसका पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम एंड स्कल. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट, तो इसमें ये हो जाएगा following part of it, foot, bones, both feet and hand, one agent to hold the forelimb and axial skeleton in the human body. One joined with forelimb is called humerus, and the bone from the pelvic girdle joining the limb is called femur. Okay. The buttock joined with forelimb is called humerus and ये femur. ठीक है. उसके बाद function, petrol joined with the forelimb is called hip, and pelvic girdle joined hind limb के तो वो femur कहलाएगा. ठीक है. And to provide a definite shape of the body, protection of the base to muscle for joining, to help the respiration, to
form red blood corpus. The total number of bones in human body is 206. Childhood में 300, ठीक है. What is the number of bones of head? forehead में 8 हो जाएगा, facial में 14, ear में 6 and 29 applied किया जो कि टंग के नीचे रहता है. The total number of bones in your vertebral column initially 33. Vertebral column initially 33. The total number of bones initially after development. After development initially 33 है, after 27. The sacral fuse into one and the caudal fuse into 4 caudal fuse into one. Okay, the total number of bones in the ribs 24. Largest femur steps. Ear bone क्या malleus और incus steps. Ear bones incus and steps. And I think it's the smallest bone है ना. palm में ये हो जाएगा, थाई में फीमर होता है, नी में पटेला and sole metatarsal upper arm में. मेरे सभी बात हुई थी इसके बारे में. फोर आर्म में रेडियो उल्ना, रेस्ट में कार्पस फिंगर्स में. ये सारे नाम आ सकते हैं क्वेश्चन में. The muscles wound muscle to bone is tendon, Mumbai to Bombay, and muscle to bone is ligament BL. Okay, अब endocrine system देखते हैं जल्दी से. कितना रह गया? System. Endocrine glands which have target body secretion of enzymes pass through it. For example, lactic gland, sweat gland, and salivary gland. Have duct of exocrine, duct वाला है ना. Exocrine secretion of enzymes pass through it. Example, lactic gland, sweat gland, mucus gland, and salivary gland. Endocrine glands में क्या? These are the ductless gland. Hormones are secreted by these glands. Hormones are sent to different parts of the blood plasma with function and effect of the main endocrine system of the human body created by them. Function and effect of the main endocrine system of human body and hormones metabolism. Particularly, it is situated in the depression of sphenoid bone of the forehead. Situated in the depression. Situated in the depression of sphenoid bone of the forehead. This is called serotonin. The weight of this known as master gland है and which are controlled by hypothalamus. Hypothalamus. Okay. The function of the hormones is somatotropic हो गया. Growth of body के लिए by the excessive stage मतलब ये हो जाएगा. और because animals height of the human grows abnormally. और lack में dwarfism TSH में क्या हो जाएगा? It stimulates the thyroid gland to secrete hormone. It stimulates the thyroid gland to secrete hormone. Stimulates the thyroid gland to secrete hormone. ये thyroid gland से related है. इसलिए it controls the secretion of adrenal cortex. Okay, growth hormone तो हो गया. It controls the function of the gonads.
In male, it stimulates seminiferous tubulus of the testis, and in female, the ovary, and to secrete the hormone estrogen. Okay, so this is estrogen ये करता है FSH का ये justice. Okay. Luteinizing hormone enters into a cell stimulating hormone secretion of testosterone hormone takes place in male and in case of female estrogen is okay. ये दोनों सेम ही नहीं एस्ट्रोजन से एस्ट्रोजन तो दोनों में डिफरेंस क्या है and estrogen difference 15 minutes left 15 minutes left कहीं तुम सो तो नहीं गए estrogen osteogen derived from bone refers to okay 15 minutes left for our session खत्म estrogen bone ये क्या है estrogen is key difference of bone forming है और ये estrogen female cells process बोन फॉर्मिंग है ये इनमें of the testis in female it stimulates secrete hormone in FSH it is given हाँ डाउट मेरा है तुम डाउट क्लियर करोगे 10 क्लास के छोटे बच्चे मेरा डाउट क्लियर करोगे तुम द क्वेश्चन इज कि अरे FSH जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का FSH हार्मोन वो सिक्रीट करता है सिक्रीट द हार्मोन ऑस्ट्रोजन ठीक है और LH हार्मोन है यहाँ भी दिया है इन द केस ऑफ फीमेल ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है तो दोनों कैसे मतलब दोनों सेम फंक्शन करता है ये मेरे को समझना है योर ऑल्सो इंटरेस्ट नीड स्लाइटली wording correction let me start with estrogen female cell falling secrete estrogen FSH stimulates the Graafian
stimulates growth and maturation as to convert the follicle growth and estrogen secretion. Ovulation plus progesterone secretion. I think ये बुक में गलत मेंशन दिया है. But in LH it is written that it secretes estrogen. I mean helps in secreting. दोनों में सेम चीज़ क्यों दिया है? Both are involved in secretion but in different stages. ठीक है. Acts as a granulose in growth and maturation of direct estrogen secretion. अच्छा ठीक है. And FSS is like direct estrogen secretion और इसमें क्या converted into estrogen by indirectly helps. Okay. LH surge, direct and primary, indirect and supportive. FSH primarily stimulates estrogen secretion and has supports in and triggers evolution. Estrogen is secreted only after the evolution. Ovulation is a false statement. अच्छा ठीक है, समझ आ गया. So the explanation is कि दोनों हार्मोन हेल्प करता है लेकिन FSH जो है वो डायरेक्टली करता है और FSH जो होता है हाँ वो डायरेक्टली करता है और LH जो है वो इनडायरेक्टली करता है. मतलब इट हेल्प्स इन ovulation, it triggers ovulation but FSH प्राइमरली सिक्रीट करने में करता है. मेरे पेजेस कंप्लीट नहीं होने वाले हैं क्योंकि आई एम अ स्लो रीडर. मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करें. एज अ मेन एस्ट्रोजन. ओके ठीक है. सो आंसर इज okay. Next is LTH, lactogenic hormone. The main function is to stimulate the secretion of milk. Secretion of ADH hormone. It causes increase in the blood pressure. अच्छा ये भी फैक्ट है, ये तो मेरे बुक में नहीं लिखा है. गोनाडोट्रोफिन. ओके ठीक है. थैंक यू बताने के लिए. आई थिंक आई शुड राइट इट. लेकिन एक बार आई विल कंफर्म इट. हाँ मेरा चैट जीपीटी का लिमिट खत्म हो गया. अब पूरे दिन क्या होगा मेरा. अच्छा रीसेट सारे साथ में. ठीक है आई विल मेक. अभी लिख लेती हूँ तुम्हारा जो लिखा हुआ है, बाद में आई विल कंफर्म. FSH and LH, FSH and LH.
are known as gonadotrophic. नहीं, इट्स ओके, मतलब अभी तो रिवाइज करना है ना, अभी तो एक रीडिंग हुई है, रिवाइज करना है तो उस टाइम कंफर्म कर लो, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बच गया है, फिर लॉग इन करो, ये करो वो करो। मेरा पीडीएफ फिर चला गया, फिर सेव नहीं हुआ होगा तो भाई प्लीज, बच गया। It causes increase in blood pressure. ADH hormone, it causes increase in blood pressure. It is helpful in maintaining the water balance in the body and reduce the volume of urine. Increase in blood pressure, the water balance, and it is this is situated below the larynx on the both sides of the respiratory trachea and below the larynx on the both sides. Trachea in the human, the thyroxine and iodine is secreted in more quantity. It increases the speed of cellular respiration. It is necessary for normal growth of the body, particularly for the development of bone hair. The normal function of reproductive organs depend on the activeness of the thyroid gland. It controls the water balance of the body in coordination with the hormones of the pituitary gland. Okay. This is caused by deficiency of thyroxine. This is caused by the deficiency of thyroxine. Cellular respiration. Cellular, it is necessary for the normal growth of body, particularly for the development of bones, the normal function of dependent on the thyroid gland, water balance of the body. This disease affects the greatly affect the mental and physical retardedness of the child. This disease affects the children, the mental and physical retardedness of the child. Myxedema. In this disease, which normally attack during youth, the metabolism does not take place, but it's hypothyroidism. Thus, disease is caused due to the chronic deficiency of thyroxine hormone. Due to this disease, the normal reproduction is not possible. Sometimes due to this disease, human becomes dumb and leaves goiter. This is caused deficiency of iron. Due to the chronic deficiency of disease caused by excessiveness of thyroxine, तो ये होता है इंसुलिन गोइटर. उसके बाद this is IK plus bulging. ओह, ये ऑफ था. एक्चुअली हुआ क्या, ये लास्ट के 2-3 मिनट बर्बाद हुए हैं क्योंकि लाइट जा चुकी है, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो चुका है. अरे यार, बोलते ही लाइट आ गई. पता नहीं इन्वर्टर चार्ज नहीं था या ऑफ था, आई डोंट नो. Anyways, let's complete it.
Are you there, Abhijit? Parathyroid gland. This is written in the right back of thyroid gland. This is written in the right back of thyroid gland of throat. Two hormones are secreted by it. Who's there? Okay. This is situated in the right back of thyroid gland, and when there is deficiency of calcium in the blood, this hormone secreted when there is a deficiency of calcium in the blood. Deficiency of calcium in the blood. Calcitonin, this hormone is released when there is excess of calcium in the blood. Okay. Hence, hormones secreted by parathyroid gland control the quantity of calcium in the blood. And secreted by parathyroid gland the quantity of calcium. Now, it is clear calcium. Adrenal gland. There are two parts of this gland. Outer part is cortex, inner part is medulla. Hormones secreted cortex and their function. एड्रीनल ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं. ऑर्गेनाइड्स भी आ गए हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम. हाँ, लास्ट के 4 पेजेस बच गए हमारे. लाइट भी आ गई. 4 पेजेस बच गए हैं. मेरा 3 घंटे होने के बाद भी मन नहीं कर रहा उठने का. मतलब मन कर रहा कंप्लीट करके ही उठने का. So should I extend this session? ठीक है, 5-10 मिनट का ब्रेक लेके आई विल एक्सटेंड दिस सेशन. डिसाइडेड, क्योंकि ये कंप्लीट करके ही जाना है. आई टेक 5 minutes break, 5 or 10 minutes break. Abhijit, are you there? I don't know I'm audible or not. Okay, it's 7:03. I'll be back at 7:10. और फिर इस सेशन को एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा और. जब तू मेरा हमदर्द हो. ठीक है, 5-7 मिनट में वापस आते हैं. Okay, coming back in 6 minutes. पानी वानी पी लेते हैं, फिर स्टार्ट करते थोड़ी देर में.
Who is there? कौन है वहाँ? One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. फिर भी है यार, अभी बहुत ज़्यादा बाकी है. एक घंटे लग जाएंगे आई गेस. चलो पानी लेके ही आ जाते हैं, ठीक है. I'm coming back in 5 minutes. पानी वानी लेके आते हैं. फिर 1 घंटे लगेंगे आई गेस कंप्लीट करने में. सो coming back in 5 minutes.
Okay, I'm back. Ba, 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 ba. I am back, everyone. जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द तला दे नहीं इसको कर लिया अभी काम नहीं किया है कोई काम नहीं तो कहीं हार के बाहर के glucocorticoids. This control the metabolism of carbohydrate. The summer when there is excessive ration glucocorticoids. This control the metabolism of carbohydrates, protein and fat. The metabolism proteins and fats. Metabolism carbohydrate, protein and fat. Mineral corti. Its main function is reabsorption of iron by kidney duct and to control the quantity of um, other on in the body. Sexual behavior and secondary sexual characters. The cortex is essential for life. Cortex what? If this is extracted completely from the body, human will remain alive only for a week or two. Cortex. ये हो गया ना हार्मोन secreted by cortex. आउटर पार्ट एड्रिनल का कॉर्टेक्स है, इन पार्ट मेड्यूला है. ठीक है. एड्रिनल ग्लैंड में भी एक मेड्यूला है. ओके. Cortex is essential for life as if it is extracted, humans will remain alive only for a week or two. In case of deformation of cortex, the process of metabolism gets disturbed. This disease is called deformation of cortex. The process of hormones secreted by medulla and the sensory. Hormones secreted by medulla and their function. Epinephrine. This is an amino acid. And then this is also an amino acid.
अच्छा, ठीक है. This the work of both the hormones is similar. They equally increase the relaxation and contraction of heart muscles. As a result, blood pressure increases, and in the case of sudden stop or heartbreak, it is helpful in restarting the heartbeat. Okay, so in case of sudden heartbeat बंद हो गई तो फिर ये हेल्प करेगा. Okay, now the hormone secreted by adrenal gland is called fight hormones. Gonads के बारे में क्या है? Ovary. The following hormones are by this estrogen, which increases. It completes the increase of ovulate. Completes the increase of ovulate मतलब क्या है? Is the increase of ovulate? I don't know. अरे मेरा तो लिमिट भी जा चुका है. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के. टन 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 टन. ओके, नाउ प्रोजेस्ट्रॉन. प्रोजेस्ट्रॉन का क्या मतलब है भाई? एस्टिमेट thickening of uterus lining during the ovarian cycle, relaxing during pregnancy. It is found in uterus and placenta. This hormone smoothens the public pubic symphysis and it widens the uterine surface. ठीक है, so the child delivers easily. Testes, the hormone secreted by testosterone and motivates the sexual behavior and growth of secondary sexual characters. ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं. The most important organ of respiratory system of human is lungs, where the exchange of gases takes place. All those organs come under the respiratory system, which helps in the exchange of gases. Nasal passage. Oh, okay. Organs में क्या हो जाएगा? Nasal passage. Okay, nasal passage. Its main function is related to sniffing. Its inner cavity is linked with the mucous membrane. This secretes approximately half liters of mucus every day. Inner cavity is mucous membrane that secretes over half liter of mucus every day. This prevent the particle of sand, bacteria, or other smaller from the body that makes the air wet entering into the body and equalizes it with the temperature of the body. Pharynx is situated behind the nasal cavity. Larynx is a voice box, part of the respiratory way which connects the larynx with trachea as called oral voice box. Its main function is produce sound. Sound? Sound of what? Interesting. There is a thin blade-like door which is epiglottis. When any food particle is solid, it closes. अच्छा ऐसे does not enter into respiration pipe. Next is trachea. It enters into this thoracic thoracic cavity. The two main branches of trachea are called bronchi. Two main branches. Right bronchi enters into the right lungs. After being divided into three branches, left bronchi enters into the left lung after being divided into two branches. ठीक है, इतना डिटेल नहीं आएगा यार. There is a pair of lungs in the thoracic cavity. Its color is red and looks like sponge. Right lung is larger in comparison to
लेफ्ट लंग, क्योंकि उधर हार्ट है. Each lung is surrounded by a member which is called pleural membrane, and ऐसा सेशन करने वाला तक जाएगा लेकिन मैं नहीं करने वाली. There is a network of blood capillaries. Here, oxygen enters into blood and CO2 comes out. The process of respiration can be divided into 4 parts. Breathing and exchange of gas. In lungs, air is taken and given out at a certain rate, which is called breathing. Exchange of gases. Mechanism of breathing में क्या हो जाएगा? Inspiration. At this stage, air from the environment enters into the lungs through the nasal passages due to increase in the dimension. Through the nasal passages. At this stage, air from environment enters into the lungs through the nasal until the pressure of air inside and outside the body become equal. Expiration. In this process, air comes out of the lungs. ठीक है. Expiration comes out of the lungs. Air inhaled. Air exhaled. 4% of carbon dioxide. Every day, approximately 400 milliliter water is excreted. Every day, 400 exchange of gases takes place inside the lungs. पापा गुड मॉर्निंग. पता है मेरा ना 3.5 घंटा हो गया. 3.5 घंटा हो गया पढ़ाई का. घंटा हो गया पढ़ाई का. हे एवरीडे approximately 4. बिस्किट अभी नहीं, बाद में. हाँ होगा, पता नहीं. Okay, bye bye. Exchange of gases. Exchange of gases takes place inside the lungs. The exchange of gases takes place inside the lungs. The exchange of gases takes place inside the lungs. The gases exchange takes place on the basis of concentration gradient through normal temperature. The exchange of oxygen gases takes place to the exchange of gas. Transportation of exchange of gases का तो मैं समझ the process of reaching of the gases finally from the lungs to the cell of body and coming back again to the lungs is called transportation of gases. ठीक है. Lungs से cell और coming back to the lungs is called transportation of gases. ठीक है. मतलब from lungs to cell and coming back again to the lungs is called transportation of gases. The transportation of oxygen takes place by hemoglobin present in blood. Present in the blood. Transportation of carbon dioxide from the cell through the lungs takes place by hemoglobin only to the extent of 10 to 20% of carbon dioxide from the cell to the lungs take place by hemoglobin only to the extent of 10 to 20%.
So mainly ये plasma. When it forms carbonic acid after mixing in plasma, in the form of 70% carbon in the form of bicarbonate is transported. ठीक है? It mixes with potassium and sodium of the blood and forms potassium bicarbonate and sodium bicarbonate. Internal respiration inside the body gases exchange takes place between blood and tissue fluid, which is called internal respiration. Between blood and tissue fluid, which is called internal respiration. Blood and tissue. Blood and tissue. The gases in the lungs is called external respiration. Um, the gases uh, in lungs is called cellular respiration. Glucose is oxidized by oxygen reaches out the cell. Glucose is oxidized by oxygen released out in the cells. This process is cellular respiration. Types of respiration for anaerobic respiration. The oxidation of food takes place in absence of oxygen. If the oxidation of food takes place in absence of oxygen, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तब ये हो जाएगा ड्यूरिंग दिस ओनली टू मोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड. ओ माय गॉड, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है. जस्ट 2%, सो आई हैव टू एंड दिस सेशन हियर. ओ माय गॉड, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है. जस्ट 1%, माय गॉड. नो, आई हैव टू एंड दिस सेशन. आपको हाँ ये अरे सडनली मेरा ना फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, तो मेरा लाइव ऐसे एंड हो गया. अरे सडनली मेरा ना फ़ोन डिस्चार्ज, सो आई थिंक आई शुड एंड दिस लाइव हियर. और बहुत मज़ा आया पढ़ के. लास्ट मिनट में मेरे को पता नहीं था कि मेरा फ़ोन कितना चार्ज है एंड ऑल, बट इट वाज अ फन सेशन. ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा डिस्टरप्ट हो चुका है, तो लेट्स एंड इट हियर. हाँ, हु इज़ देयर? डन विथ योर स्टडीज़? एक्चुअली मैं अभी लाइव थी, बट सडनली मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया. मेरे को नहीं पता था कि कितना चार्ज है एंड ऑल. आई डोंट नो आई शुड कंटिन्यू और नॉट. मेरा मन तो है कंटिन्यू करने का, बट डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा है. एक्चुअली बस 3-4 पेजेस रह गए हैं, तो मेरा मन है कि वो कंप्लीट करके ही उठने का, बट मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, तो मे बी आई विल कंटिन्यू ऑफलाइन. स्टिल अभी देख लेते हैं जब तक फ़ोन वर्क करता है. देन कंप्लीट. हाँ, अभी मेरा यही प्लान है. आई वांट टू कंप्लीट. आई एम ऑन वे टू ऑफिस. ओके, ग्रेट. Okay, let's complete the left pages.
anaerobic respiration. Mm, uh, final product of anaerobic is a visual like skeletal muscle is lactic acid in yeast. uh, Certain bacteria, ethyl alcohol and ethanol is produced. Okay, now okay, final. As a result, CO2 and HCO. What? Okay, this train went and I studied for 1 hour like that. ओके यू वर लाइव मतलब तुम भी थे आप भी थे उस लाइव में यू कैन कैलकुलेट योर स्टडीज टाइम ट्रेन goes no time. I don't need clock. Presence of oxygen. The complete oxidation of glucose takes place. As a result, carbon dioxide and great. Glycolysis, cytoplasm creates. Its study was done by EEMP path. आई थिंक मेरे को ना 3 घंटे का सेशन ही करना चाहिए बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है मेरे लिए भी मेरे फ़ोन के लिए भी और सब कुछ के लिए सो glycolysis is present in both types of respiration but the morning energy glycolysis is present in both types of respiration aerobic and anaerobic this process takes place inside हाँ अभी तक भर रही हूँ मेरा 2-3 पेज बाकी रह गया है इसलिए और बीच में कुछ डिस्ट्रप्शन भी आ गया मतलब मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया और कुछ कुछ चीज़ें हो गई तो glycolysis is present in both types of respiration aerobic and anaerobic this process takes place in cytoplasm so glycolysis takes place in cytoplasm and both type is present in both type of respiration मतलब ग्लूकोज को जो तोड़ना होता है as a result of decomposition of one glucose atom in glycolysis two atoms of pyruvic acid is formed decomposition of one glucose atom in glycolysis two types of pyruvic acid is formed to start this process two atoms of ATP takes part but at the end of the process four atoms of ATP are obtained okay two atoms of takes part therefore
As a result of glycolysis, 2 atoms of ATP are obtained, that is 1600 calorie each for. क्या हो रहा है ये? मत करो परेशान. There is no need of oxygen in glycolysis. Hence, this process is similar to anaerobic respiration. Okay, there's no need of oxygen. Hence, EMP pathway. हाँ. Correct. In this, 4 molecules of hydrogen formed, which is used in converting NAD to NADH. तो in this 4 molecules of hydrogen formed, 2 ATPs are formed. ठीक है, इतने कैलोरीज हो जाए in the 4 molecules of hydrogen formed, which is used in converting NAD in NADH2. अब तुम बताओगे कि NADH2 क्या है? Krebs cycle. Please. NADH2. Krebs cycle. So this is called citric acid cycle or tricarboxylic cycle. Krebs साइकिल को बोलते हैं ये. और क्या है? This process is completed inside the mitochondria in the presence of specific enzymes, 2 atoms of each ADP and adenine diphosphate वाला ना, and 2 atoms of each ADP and ATP form. In this cycle, 4 pairs of oxygen are released. The complete cycle is of 2 pyruvic acid and produce total 4 atoms of carbon dioxide. In our system, maximum ATP atoms are formed during Krebs cycle. ठीक है. मम्मी बहुत ज़्यादा तेज़ी है, मेरे से नहीं हो रहा अब. तुम गई थी ना अभी, तुम गूगल करने गई थी. नहीं यार, तुम तो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो भी सकता है. Reaction of energy by the oxidation of pyruvic acid, 1 atom of ATP, 5 atoms of NADH. Production of energy by oxidation of pyruvic acid, 1 atom of ATP, 5 atoms of NADH, and 1 atom of NADH2 are formed. इतना डिटेल नहीं आएगा. From 1 atom of NADH, 3 atoms of ATP, and from 1 atom of NADH2, 2 atoms of ATP are obtained. तो completely 3. From 1, मेरे पापा बाहर गाना गा रहे. From 1 atom of NADH2, 2 atoms of ATP are obtained. Hence, from 1 atom is equal to 18 atoms of ATP are formed. From 1 atom of glucose, 2 atoms of pyruvic acid are formed by which. ठीक है यार, 38 ATP atoms are formed. That's it. We don't need calculation. We are not science students. हाँ, because I'm in rush. अभी लग रहा है कि बस जल्दी ख़त्म करें यार. रेस्पिरेटरी, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है. इट्स नॉट लाइक कि आई एम नॉट चार्ज्ड. आई एम 100% चार्ज्ड, लेकिन फ़ोन चार्ज नहीं है मेरा. रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस, carbohydrate, fat, and protein are the main respiratory substances. At first, oxidation of glucose takes place, then fat. After the consumption, वही तो यार, जब साइंस वाले को नहीं याद रहे तो मेरे को क्यों याद करना. जीएस वाले को कोई ज़रूरत नहीं है. Respiratory
Substances, carbohydrate, fat, and protein are the main respiratory substances. हैं? Carbohydrate, fat, and protein are main respiratory substances. मतलब adverse oxidation, अच्छा, glucose takes place, then fat, and after the consumption of then fat. After the consumption of carbohydrate and fat, oxidation, protein starts. अच्छा, ये बात है. फर्स्ट में ग्लूकोज, सेकेंड में फैट, और उसके बाद प्रोटीन. रेस्पिरेशन ऑफ it also reduces the weight of the body. Respiration reduces weight of the body. है ये क्या क्या मिल रहा है? Respiration reduces weight of the body. मतलब जिनको वेट गेन करना है वो मतलब सांस नहीं ले. ये क्या है? मेरे आंखों को भरोसा नहीं हो रहा है. अभी तो कहाँ से गए. सब करो करो. नहीं, वो कर लिया क्रैप साइकिल, लेकिन उतना नहीं है ना हमारे में एक्चुअली. भाई मेरे चैट जीपीटी का लिमिट भी ख़त्म हो गया और ये अभी तक आया भी नहीं. अरे पता है जो जीएस के स्टूडेंट्स होते हैं ना. लड़के चले. क्या था? Variation reduces weight. अच्छा, ऐसा है क्या? थैंक यू सो मच. एक वो अभिजीत भी एक सजेशन लेके गया और अभी तुम्हारा सजेशन. थैंक यू सो मच. आई चेक इट. चैट जीपीटी गो सब्सक्रिप्शन. हाँ तो क्या था? कहाँ थे हम दोनों? एक्चुअली हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जो जीएस के स्टूडेंट्स होते हैं ना वो साइंस जितने डिटेल से आई एम रीडिंग उतने डिटेल से भी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि नहीं ज़रूरत होती है इतनी. मतलब ये एटीपी ये सब नहीं आएगा तो इतना ज़्यादा डिटेल नहीं आता. बहुत बहुत फैक्चुअल चीज़ें आती है. या तो ऐसा आएगा जो किसी को नहीं आए या फिर ऐसा आएगा जो बिल्कुल फैक्चुअल डिटेल है. सो साइंस कंपटीशन नहीं है. बस चलो एक बार पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं. मतलब जो जो दिया है बुक में एटलीस्ट उतना पढ़ लेते हैं. टू मेंटेन लाइफ ऑर्गेनिज्म. हाँ वही बात है. और ज़रूरत नहीं है ना. मतलब स्टेट पीसीएस या पीसीएस या यूपीएससी के स्टूडेंट को ये ये सब डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है. जैसे साइंस टेक्नोलॉजी में टेक में आता है क्वेश्चन, लेकिन ये सब पे नहीं आता ज़्यादा. ये सब में बहुत फैक्चुअल डिटेल्स थोड़ी बहुत आ जाएंगी उतना नहीं. टू मेंटेन लाइफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म to maintain life organism perform some basic function is called nutrition. Nutrition is one of the basic function of the life which intake nutrients is a substance by which an organism. सब मेरे अनफिल्टर्ड वर्जन को देख रहे हैं आई गेस. कि ये बैक कैमरा कैसे पड़ती है. बट माई बैक कैमरा इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ कैमरा. ओके बाय बाय स्वीट हार्ट. For example, carbohydrates and fats are the source of energy, whereas the protein and minerals are the nutrient of biosynthesis. Carbohydrate are organic compounds in which the
रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ओके। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, रेशियो क्या है, 1:2:1 कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ sugar and starch are major intake in the animal and humans. 50%, 50 to 70% energy is obtained by oxidation of carbohydrate. Okay, carbohydrate containing aldehyde group called aldose and with ketone group is ketose. Ketose and aldose carbohydrate derivative of polyhydroxy alcohols. Okay, classification of carbohydrate classified into three major groups. मोनो भैया कब खत्म होगा ये खत्म ही नहीं हो रहा है। Carbohydrates classified into three major groups. Monosaccharides, these are simple sugar made of a single ketone unit. Most abundant monosaccharides found in nature is glucose, containing 6 carbon atoms. Say 6 H12O, 6 triose, tetrose. Again 5% battery. Oh my god. There are simple oligosaccharides. Saccharide when 2 to 10 monosaccharides join together they form polysaccharide. They are usually crystalline in nature and sweet in taste. Oh my god. Okay, so oligosaccharide when 2 to 10 monosaccharides join together, they form oligosaccharides. They are usually crystalline in nature and sweet in taste. Okay, join together they form oligosaccharides. They are usually crystalline in nature and sweet in taste. उसके बाद maltose, sucrose, lactose and disaccharide made up of two monosaccharides, oligosaccharides. When two or ten, ठीक है, join together they form oligosaccharides. They are usually crystalline in nature and sweet in taste. Maltose, sucrose, lactose and disaccharide made up of two monosaccharides. Mm, okay, दो, ठीक है, पॉलीसेचराइड्स दे आर कंपाउंड सो दैट आर फॉर्म ड्यू टू ज्वाइनिंग लार्ज नंबर में, 10 से भी ज़्यादा हो जाएगा इसमें। देयर आर इनसॉल्युबल एंड टेस्टलेस। some examples of polysaccharides are starch, glycogen, cellulose and chitin, etc. Function of what? Carbohydrate work as a fuel. During the process of respiration, glucose break into CO2 and H2O. During respiration क्या होता है? Glucose break into CO2 and H2O with the release of energy. 1 gram of glucose gives 1 gram of glucose gives 4.2 kilogram of calories energy. Nucleic acid are polymers of
nucleic acid or polymer. So what? Where it is a polymers of nucleosides. अरे भाई nucleic acid are polymers of nucleosides and nucleotides and contain pentose sugar. Lactose of milk is formed from glucose to lactose. Lactose of milk is formed from glucose and galactose. Glucose is used for the formation of fat. Glucose is used for formation of fat and amino acid. Carbon skeleton. Okay. Carbon skeleton of monosaccharides is used in the formation of fatty acids, chitin, and cellulose. Sources of carbohydrate: when rice, maize, sweet potato, and other plant and animals are the sources of carbohydrate. Protein word was first Mendelius. ठीक है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो पता है, चलो ठीक है. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स organic compound made up of 20 types of amino acid protein. Approximately 50% of the human body is made up of protein. Nitrogen is present in protein in CHO. 22 22 types of protein is necessary for human body. 22 types of protein is necessary, out of which 12 are synthesized by body itself and remaining 10 are by body, called essential amino acids. On the basis of chemical composition, on the basis of chemical composition, it is divided into a simple protein. सिंपल प्रोटीन में क्या होगा कि बस एक अमीनो एसिड होंगे, एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलेंस एंड हिस्टोन्स etc. कॉन्जुगेटेड में हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में हो जाएगा हैविंग सम अनदर केमिकल कंपाउंड्स. अरे यार मेरा तो कैमरा ही ऑफ है. हाँ 8 मिनट तो चल जाएगा मेरे ख्याल से. लेट्स सी.
इसके बाद क्या है, फैटी एसिड आर टोटल सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर फाउंड इन फिश ऑयल। भाई मत कर ऐसे, बैक हो जा रहा ना। ठीक है, फैटी एसिड आर फाउंड इन फिश ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल। ओनली कोकोनट ऑयल एंड palm oil are the example of saturated oil. 9.3 kilo calorie energy is liberated from 1 gram of fat. ठीक है, it's not important. Normally an adult person should get 20 to 30% of energy from fat. An adult person should get 20 to 30% energy from fat. uh, okay, so fat is important. Main function of fat: it provides energy to the body, it remains under the skin and prevents the loss of heat from the body. So under the skin prevents the loss from heat, it makes the food material tasty. It provides different parts of the energy due to the lack of the fat. Skin gets dry, weight of the body decreases, and the abdominal check. Due to the excessiveness of the fat, the body gets fatty. Heart disease. Vitamins was invented by Hopkins. Vitamin. The term was coined by Fung. Vitamins are organic compound contain no calories is obtained from it. No calories is obtained from vitamins, but it is important for regulating chemical reaction and metabolism of the body. On the basis of the solubility, vitamin soluble in water B and ये हो गया। विटामिन्स तो है मेरा कवर शायद लूसेंट वाले बुक में, और ये सारे अनदर टॉक्स में। Finally, we completed our book, मतलब बायो का रीडिंग। Oh my god, this is insane। भैया 60 तो कितना हुआ, 5 घंटे, 5 घंटे लगने चाहिए थे और हो गए हमारे 4 घंटे तक, कल 1 घंटा। Oh my god, I'm feeling so happy and satisfied. Oh, it was nice session. The weight of it has not given birth to child is 50 grams, and weight become after giving birth become by weight of Taurus child का 50 grams before child, और after 100 grams the weight of the kidney 150 ग्राम। ये तो हो गया था किडनी का 150 milliliter inside the body. The capacity of heart to pump 4.5 liters per minute. The length of the small intestine is approximately 7 meters and its diameter is 2.5 centimeter. Small intestine is 7 meters and diameter is the blood circulation inside the body 23 seconds. The antibiotic namely penicillin is from penicillium fungus. The most intelligent universe, कितने इंटेलिजेंट है पता है। Albatross is the largest seabird. ठीक है, तो within 50 lakh hair on the body. In the initial formation plant center, HCG hormones low. It allows for detaining excreted through urine. At this time, in the testing of the urine, due to the presence of this hormone, pregnancy test is carried out. Oh my god, the heartbeat of the children is more than that of the adult. The single respiration completes in 5 seconds, in 2 seconds inspiration, and 3 seconds expiration. So, inhale, exhale. Everyday blood in the body of human carries approximately 350 liters of oxygen to cells of the body. Out of this, 97% of oxygen carried, 97 is carried. Hemoglobin 3%. Oh my god, guys, काश ये खुशी शेयर करने के लिए अभी कोई होता, but still, I should say this कि आई एम वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी। मेरा टैब 4% है, मेरा फ़ोन 4% है अभी, एंड हमने 4 घंटे पढ़ाई भी कर लिया है।
I'm literally so happy and this day is such a pretty day यार, बहुत मज़ा आया पढ़ने में और बहुत मज़ा आया जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं। और थैंक यू सो मच मेरे टाइम को इतना इजी बनाने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू जानवी एंड अभिजीत को थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि वो मेरे साथ पढ़ाई भी कर रहा था। सो या थैंक यू सो मच गाइस, रियली आई फील सो लव्ड एंड बहुत अच्छा लगा। ओके बाय, चलो चलते हैं फिर, अब कुछ खाते हैं या फिर आगे का काम करते हैं। ओके बाय बाय, टाटा। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। दिल कहता है तेरी